everyone. Good evening to all. I hope I'm audible. सबको मेरी आवाज clearly आ रही है? I just want a quick yes in a chat box or a thumbs up reaction अगर आपको मेरी आवाज clearly आ रही है. Guys, you can respond in the chat box. Thank you, Yogesh sir, Arun Kumar sir. All right. Thank you, everyone. In case अगर किसी को मेरी आवाज clearly नहीं आ रही है, if you're not able to hear me properly, I've just sent a message in a chat box. All right. Harshit is asking, ma'am, is session in English or Hindi? I'll come to that. Do not worry. I'll come to that. Just give me a moment. And till then, we will be waiting for few more minutes for other people to join. हम थोड़ा wait करते हैं. All right. Guys, till then, I'm giving you time to set up your cameras. आज की पूरी क्लास हम I hope सब अपना कैमरा ऑन करके ही रखेंगे so that this class would be more interacting. I'm giving you few more minutes so that you can set up your camera. I can only see few people as of now. I can see Yogesh sir, Harcharan Singh sir, Balvinder Singh sir, Mitesh sir, Saif sir. Thank you. I want till then, guys, set up your cameras and just give me a few minutes and we will be good to go. All right. All right. Before we jump right in, this is just a reminder, guys. Keep your copy and pen ready with you and find a comfortable place जहाँ पे आप comfortably पूरे concepts जो भी हम पढ़ने वाले हैं आज की class में. This session will be 2 hours, all right? And please make sure that you are seated in a quiet and noiseless environment so that you can get maximum value output from this class. I'll quickly give introduction about me. This is Shweta. I will be your facilitator for today and I will be here throughout the class. मैं पूरी class में आपके साथ रहूंगी and I will be assisting our expert Manish sir. आज की क्लास में मैं मनीष सर की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहूंगी. आपको पूरे सेशन में कोई भी डाउट आएगा, all you have to do is that you have to type your doubt or your query in the chat box and I'll make sure that I pick up your query and I pass on to the Manish sir. All right. Since Manish sir will be busy teaching you and explaining all the concepts in depth, this will be my responsibility कि आपको पूरे सेशन में कोई भी डाउट आएगा, I will pass on that doubt. All right. To Manish sir. And this was all about me and my role here today. Now I want you all to respond. I want your name and your occupation maybe and the state you belong to. आप chat box में अपना नाम, आप कौन सी city से हैं and maybe आपका occupation. If you can type in the chat box, then we can have a very engaging session. Hello, Mansi. Mansi is from Bhopal. Welcome, Mansi. Welcome on board. All right. CA finalist. All right. Yogesh so. Soumya Das, Kolkata, Mumbai. Yogesh so. Shivansh from Chandigarh, student. Subrata Singh, Imphal. Subrata, Imphal. Thank you. Shireen, Kerala. Atul Kumar, Raipur. Merchant Navy. All right. Bangalore. Deepak Balwani from Bhopal. Welcome on board, guys. Welcome.
since many people are from different parts of India and not everyone would be comfortable in one language, right? सब एक language में comfortable नहीं होंगे. So for your comfort, guys, what I am doing right now is that I'm launching a poll. This poll will be visible on your screen. आपको इस पोल में आंसर करना है कि आपको आज की पूरी क्लास कौन से लैंग्वेज में चाहिए. जैक्सन सर, आई हैव लॉन्च्ड अ पोल. आपको इस पोल में आंसर करना है. You have Hindi, English, and mix of Hindi and English. So you can choose selectively in which language you're comfortable in. Money from Amritsar. Money, so welcome. Voice not there. Arjun, so my voice is not clear. Try rejoining, sir. I think my voice is clear for other people. Try rejoining. Guys, you have to answer this poll. अगर आप ये poll answer करेंगे, then accordingly हम उस पूरा session उसी पे based रहेगा. Either Hindi or English or mix of both the languages. हमारा course आप लोगों के ऊपर ही depend करता है, right? Yuvraj sir is saying English is better. So just answering the poll so that we get a clearer view. Till then, again, please switch on your videos. I am ending the poll in 5 seconds. Hindi, Kerala, okay. To clear confusion, that is the reason we have launched the poll, and I am ending the poll right now. All right, what I'm seeing here is that most of the people are comfortable in both the languages. So I'll pass on this information. मैं मनीष सर तक ये information पहुंचा दूंगी. मैं उनको बोल दूंगी कि make this class in both the languages. First, explain everything in English and then summarize it in Hindi, because most of the people who are comfortable only in English, उनको हिंदी में understand करने में problem रहेगी. So what I'll do is that I'll inform sir. We'll cover. Sir is comfortable in both the languages. We'll cover everything in English and then we'll summarize everything in Hindi as well. All right. Manish sir is saying unmute this account, sir. We will give you permission at the end of the class. अगर आपको कोई doubt रहेगा, तो we will give you permission. Do not worry. Sit back, relax. English, yes, Komal. We will conduct this class in English. And all right. Few more questions, guys, before we begin. What is your knowledge? What is your understanding about stock market? आपको stock market के बारे में क्या पता है? मतलब, there is this myth that stock market is gambling. What according to you is stock market, whether it is a business or money making machine or gambling for you? Just type in the chat box what according to you is stock market. Vishnu Dev sir is saying business, Komal business, Ajit it's business, money making machine. Harchan sir is saying Shivu business. I am a fresher, but my opinion is it's okay, business. More difficult way to make money, Yogesh sir is saying. Okay. It's a business. CGS NSK. If it is possible for you guys, all the people with username Realme or iPhone, if it is possible for you to change your name, that would be great. Because one-to-one interaction hoga, right? It's a good platform where we get highest return compared to other tools with proper research and knowledge. Very good, sir. Very good. This is our understanding also, and this is what we want to convey to you as well. Balwinder sir is saying, I lost 1 lakh approx till today. Oh God. No worries, sir. We are here at your rescue, and do not worry. Okay. So before we begin, I also want to ask you, how many of you are beginner here? कौन beginner है? बिल्कुल absolute beginner, जिसको stock market के बारे में कोई idea नहीं है, या पता है maybe कोई friends उनका stock market में है, या colleague है, या family friend hai. So they know somewhat knowledge of stock market, but not that much, and that is the reason obviously they are here. 3-4 months beginners. Okay.
Guys, I've also launched one experience poll. आप chat box में भी reply कर सकते हैं, or you can use the poll as well. Beginner, just heard about it, Saif sir is saying. Sunil Danu from Uttarakhand BTech. Welcome, Sunil sir. 5 years. Okay, ST. So I'm saying 5 years. I am a beginner, Sunil sir. Hitesh Chaudhary 1 year. मैम मैं अभी तक amount log check कर चुका recently open account. Saif sir is saying. Chandan Kumar sir, okay. I have read your message and it is concerning, but do not worry. I'm ending the poll. Sunil, don't call me sir. All right, Sunil. Okay. Guys, I hope you all know that this class will be on options, right? This class is on options. How many of you are an option trader? या कौन option trading करता आ रहा है या option trading prefer करता है? I hope you guys know option, have the potential to deliver highest percentage return, right? Correct? Okay, Shivu sir is saying yes, me, Vicky sir, Sharon, Redmi, Hitesh Chaudhary, Kaurav sir. All right. Okay, so we have a mix of all the people from starting from beginner to all the people who have been trading and have somewhat experience and are doing options. All right, I will pass on all the information starting from the language to the experience level. Manish sir tak main pass on karungi. And once again, guys, please switch on your cameras. Manish sir is here with us. I will hand over everything to Manish sir once I see everyone. All right, let's make this class more interactive, active, and interesting. We are here. We have prioritized our education on Friday evening. That is very clear that हम यहाँ पे एक purpose से हमें stock market options के बारे में सीखना है. And it will be our responsibility, Manish sir and me, that आपको पूरा concept सब कुछ clearly समझ में आए, right? Why I'm saying to be attentive? There is a reason. मैं आपको explain करती हूँ. Yes. There is a contest, guys, which is going on throughout the class. पूरे class के दौरान एक contest चलेगा, and you will be able to earn prize rupees worth 10,000. How will you participate and how will you win? I'll just quickly explain the criteria. Okay. First is you have to be very engaging, interactive and active throughout the class. आपको पूरी class में active बैठना है, अपना camera on रखे, and quizzes होंगे कुछ class में. Anil sir is saying, should we get the recording of this class? So you will get the recording, but that does not mean that you will leave the class. Live session का अपना ही एक मजा है. Live session में अगर आपको doubt रहेगा, आपका doubt then and there clear किया जाएगा. Recording में we will provide you recording, do not worry, we will provide you. हम आपको PPT, resource, document, everything will be given to you. But enjoy the live class, all right? So coming to the masterclass contest, 3 winners will be chosen and they will be given Amazon voucher worth 200 to 250. Shishir sir is saying आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज clear है सबके लिए? Is my voice audible? Or there is some technical issue from, so I think there is some technical issue from your end. Try rejoining. Okay, so 3 winners will be chosen. Unko Amazon vouchers milega. This is the first criteria. Second is a student of the class. Now you can become the student of the class. How? You have to switch on your cameras. Is my voice low? Guys, please click on the sound bar on your top. If you're logged in on your phone, click on to the sound bar on your top left. Voice is clear. Ajit sir is saying it's crisp. Okay. Student of the class, you have to turn on your cameras. You have to be very engaging. You have to ask
questions in the session. Guys, you have to be very insightful. आपका ऐसा question आना चाहिए कि मनीष सर भी सोचे, okay, I am in the right track and people are also in the right track. जिस direction में मैं उनको पहुंचाना चाहता हूँ उस direction में जा रहे हैं. Even you make other people force them to think in that direction. You have to be very engaging. आपको questions पूछने पड़ेंगे, right? जो भी student of the class रहेगा उसके लिए भी हमारे पास एक benefit, the reward है, जो कि e-books होंगी. We will be delivering all the e-books to you, which is worth 1,000, obviously free. And also there is one scavengers hunt contest which is going on. Now guys, scavenger hunt में एक word रहेगा. आपको वो वर्ड जम्बल्ड करके पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी लाइक टॉप राइट या टॉप लेफ्ट या बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट में एक लेटर रहेगा एंड यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द लेटर्स. एंड जब आप वो लेटर्स ज्वाइन करेंगे वो पूरे जम्बल रहेंगे. वंस यू गेट ऑल द लेटर्स एंड वो ज्वाइंड आप जब करोगे एक वर्ड बनेगा उससे. तो जो भी वो वर्ड बनाएगा एंड स्क्रीनशॉट सेंड करेगा आफ्टर द क्लास, we have something for them also, and I will reveal everything during the session as well. So stick with us throughout the end and we'll make sure that आपके लिए ये class पूरी interactive बनाई जाए. And not just this, if you are with us throughout the end, you will receive the certificate, and for that you also have to fill one NPS form. I will explain you everything. Now अब हमें कौन पढ़ाने वाला है? हमें मनीष सर पढ़ाने वाले, right? It is important कि हमें मालूम हो कि हमें हमारा मेंटोर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सर का बैकग्राउंड एंड व्हाट ही डज. So I hope most of you might know Manish Kohli sir. पहले से उनको आइडिया रहेगा मनीष सर के बारे में. Manish sir has been in finance background more than 10 years and he is a full-time trader. He not only does option trading, वो ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ नहीं करते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, वो मेंटोरशिप भी देते हैं. सो गाइस, इट इज वेरी रेयर टू फाइंड ऑल द पीपल जो ट्रेडिंग भी करते हो और आपको पढ़ाते भी हो, राइट? यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. यू कैन एज्यूम दैट सर यू आर गिवन विद द बेस्ट टीचर. ही इज CFA level 3. I hope most of you might know about CFA level 3, right? He has cleared all the levels. And he was also part of risk assessment unit at Morgan Stanley. And that's about Manish sir. Please have copy and pen ready with you. Take as much value as possible in this 2 hours, right? We all know trading is a vast domain. Everything cannot be covered in just 2 hours. सब कुछ हम 2 घंटे में कवर नहीं कर पाएंगे, but we will try our best. जितना वैल्यू आउटपुट हम आपको प्रोवाइड कर पाए, उन स्ट्रैटेजीज को आप नेक्स्ट डे मार्केट में भी अप्लाई कर सके. वी आर हियर टू प्रोवाइड यू स्ट्रैटेजीज दैट कैन गिव यू रियल मनी इन द मार्केट, राइट? I think we're good to go. Sir will explain everything about CFA. Do not worry. Manish sir, are you here? Can you hear me? Yeah, I can. Hello sir, good evening. Yeah, good evening. How are you sir? I'm fine. All right, so we have an audience who are comfortable in both the languages, Hindi and English. And I think most of us are beginners, so it would be better if we cover everything from the very start. We would be covering from the basics. That is from the scratch, but since there is a limitation with respect to the time, so Right, I'll try to cover right from the beginning. It might be overwhelming in the beginning for the beginners because the option trading is like the advanced version of trading. But if you like stick to the end, definitely you might be having, even if you get like 60% of whatever I'm teaching, you definitely would be able to do something. Okay, so somebody, when you ask the question that how many of you trade in the stock market, one of the person replied that it is the best way of losing money. I mean, answer was pretty good, but it is a good way to lose money if you don't know anything about the market. I mean, if you are, suppose if you want to be an engineer, you studies for like 4 years. If you want to be a doctor, you have to study for 4 years and then to have to take the experience of 2 to 3 years. But trade market is the stock market is the only thing. What you do is you just put the money in, open the demat account, put your money in there and start trading. You start losing and then you think that it's a gambling. Actually, it's a sign. Somebody also replied that it's a good
it's a business if you have knowledge. That was a pretty decent answer. So am I audible now? Somebody said ki awaaz kam aa rahi hai. No, your voice is little low. If it is Okay. possible, Is it fine now? yeah, it is fine. Yeah, it is fine. Guys, I hope everyone is excited for the class. I just want excited in the chat box or a thumbs up, and we are good to go. Just type excited. Okay, so what we would be covering is we will be starting from the basic, and there might be people who are actually experienced with respect to trading. They would have been trading and they might be knowing about the basic. So I'll be sharing one strategy as well. So for those who are intermediate, I'll be definitely teaching them at least like in the first half or up to 30 minutes or 40 minutes itself. They would be able to learn something. So how many of you are index trader? Nifty and Bank Nifty call buy करने वाले? How many of you are there? कितने लोग Nifty Bank Nifty में call buy generally करते हैं? Sellers तो होंगे ही होंगे. Just wanted to know about it. Yeah. So definitely. So I'll share you one strategy which I generally follow. So what I do is just so this is what I would be sharing as a strategy for beginners. Just don't get worried. I'll be explaining you the basic concept so that you can actually be able to understand the strategy when this part comes. We will be explaining what are these candles, okay, and we will be discussing about support resistance so that you can actually execute the strategy. So how many of you know about India VIX? It is like the volatility factor or volatility indicator. So if you want to trade in Nifty and Bank Nifty, particularly Bank Nifty, what you can do is if you want to buy or sell the calls, if you are about to buy, all you have to do is put a 5-minute chart. सिर्फ आज strategy बता दूंगा. As you can see, इस point से, from what is the time frame here, it is for the advanced version ताकि उन्हें लगे कुछ मिल जाएगा. From this part, 10:15 onwards, there was a continuous downtrend in India VIX. This simply implies कि यहाँ पर there has to be an uptrend. See, and you can see the timing also. I'll show 9:15 and this was 10:15. This वाला part. यहाँ पे ही हमें पहले ही पता चल गया था. We get to know that market is going to move upside, particularly Bank Nifty. So this is the how you have to proceed. I'm just giving you the glimpse of what I'm going to teach you. ठीक है, तो आपको अगर सीधे शब्दों में बताया जाए तो इंडिया विक्स को देख के आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं. ऑप्शंस में कौन सा स्ट्राइक खरीदना है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. क्योंकि कुछ बिगनर्स भी हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखिएगा. दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड. बस कभी कभी जो एक्सपायरी और डे बिफोर एक्सपायरी में डजंट वर्क, जनरली ऐसा करता ही है और आप कहीं भी देख लेंगे तो इट विल डेफिनेटली बी वर्किंग. लेकिन कभी कभी नहीं करता है, वो कब होगा कैसे होगा दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. आप ये कल का भी दिन देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये यहाँ से लास्ट में नीचे गया. कल थोड़ा सा एक्सपायरी वाला था तो उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, बट उससे पहले भी इफ यू सी तो आपको वहाँ दिख जाएगा अप डाउन, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, ये वाला डाउन हो गया था, फिर स्टेबलाइज हुआ. देयर आर टाइमिंग्स. Okay, so there are timings also that when you have to make a trade. This is a dead zone. 10:30 to 11:30 is a dead zone. Never trade in that region if you are an option buyer. So this is what my strategy. I'll be discussing all this in detail. So my introduction has already been given to you. As I said, I'm a full-time trader myself. So मेरे जितने trade, I also run my own financial advisory services. So I have certain clients for which I used to give calls also. तो वो मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही चलाता हूँ. और जो मेरे ट्रेड्स होंगे यू कैन सी इन ट्विटर हैंडल. सो दिस इज माय ट्विटर हैंडल. आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू. Yes, sir. या सो आज तो मैं दे नहीं पाया बिकॉज आई जस्ट गेव वेयर द बाइंग और सेलिंग वुड कम. सो आई एम अ प्री वॉल्यूम ट्रेडर. आई ट्रेड ऑन स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री वॉल्यूम. दिस इज व्हाट आई डू. तो मैं 9 बजे ही करीब लिस्ट निकाल लेता हूँ कि वेयर आई हैव टू बाय, वेयर आई हैव टू सेल. ठीक है, सो आज तो नहीं. यस्टरडे देयर वाज अ पोजीशनल कॉल जो मैंने दी थी इसमें, आई कैरिड इट, LIC हाउसिंग की. इट हिट माय ऑल टारगेट्स टुडे. तो ये कल ऐसा हिट नहीं हुआ था, वी कैरिड इट, तो आज इसने सारे टारगेट्स मार दिए थे. एंड इसमें तो कल एक जो था MCX, उसने पहले स्टॉप लॉस हिट किया, देन इट वेंट अप. बट ये होता ही है, इससे पहले टाटा स्टील का था, इट ऑल्सो वर्क फाइन. गिरते हुए मार्केट में इट वेंट अप. और टुडे आई जस्ट गेव पेट्रोनेट एज बाय, बजाज ऑटो, LTTS, मारुति एज अ सेल. जहाँ पे in advisory also I only gave like Bajaj Auto as sell. LTTS भी I gave for sell only. तो वो मैं आपको दिखा दूंगा. So देखो, ऐसे volatility market में it is really difficult to make an intraday trade. How many of you agree from the past 3 or 4 months it is actually happening, but still we have to make a trade. ठीक है, there are n number of factors which you have to keep in your mind in order to make a trade. I usually keep like more than 10 to 12 factors before I make a trade.
मेरे ट्रेड 9 बजे ही मुझे कंफर्म हो जाते हैं 9-10 तक कि वेयर आई हैव टू बाय, वेयर आई हैव टू सेल। ठीक है, ऑल जस्ट हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द कैंडल, उसके बेसिस में वी हैव टू लाइक स्ट्राइक आउट द लेवल्स एंड देन आई मेक अ ट्रेड। तो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज का जो था इट वाज बजाज ऑटो का आज सुबह सुबह इट वाज लाइक सेल एंड एलटीटीएस, इसने इट हिट माय टारगेट ऑफ 3600। एलटीटीएस भी 2930 तक आया था, इट हिट माय टारगेट and LSE was positions which I gave yesterday. So this is how we proceed. Okay, so there are factors involving market में, ऐसे market में trade करना like yes unpredictable है, but if you have somebody said this market are unpredictable इसलिए कि VIX is going about 22 17 के नीचे जब आएगा then we might be having some bullishness. Dollar index is above for 104 105, crude above $110. ठीक है, और at the same time rupee is hitting all time lows again and again. ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स इज वेरी हाई, एट द सेम टाइम बॉन्ड यील्ड इज अबव 1.6, करीब 3.1 3.2 चल रही है, इन्फ्लेशन इज आल्सो वेरी हाई। तो अभी तो ये है कि जहां आपको वॉल्यूम दिख रहा है प्री मार्केट में, जस्ट मेक अ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इंट्राडे हो जाता है, ऐसा नहीं है। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे मार्केट फेल डाउन ड्रास्टिकली, बट उस टाइम पे टाटा स्टील वेंट अप, सो दिस वाज अ गुड ट्रेड, तो उसमें मिल गया था। सभी की लाइफ मिजरेबल है, इट इज नॉट अबाउट बायर, इट इज ऑल्सो अबाउट सेलर। सेलर की भी हो गई क्योंकि एक दिन मार्केट 400 पॉइंट अप, अगले दिन 400 पॉइंट डाउन, तो सेलिंग वाले भी फंस रहे हैं, पर्टिकुलरली स्ट्रैंगल स्ट्रैडल वाले। सो लेट्स begin with the classes. So what we will be discussing, that I'll explain in just short. We'll be discussing the basics of options. What are options? What are calls? What are put? What are support and resistance? See, support and resistance is like important to understand in order to make the strategy work, which I'm going to discuss. That is India VIX and Nifty and Bank Nifty. How to buy calls with like perfect stop loss. Risk to reward should be 1:3, 1:4, or 1:2. दैट इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज, वी हैव टू कीप द स्टॉप लॉस। अब वो आपको कब तक पता नहीं चलेगा जब तक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इट आल्सो वर्क्स इन ऑप्शंस आल्सो, उस बेस में, एंड देयर आर हार्मोनिक्स ऑफ एन ऑप्शन, कैसे वो मूव करता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्मोनिक्स, तो आप किसी को भी जस्ट पिक आउट एनी कॉल, कौन सा स्ट्राइक चूज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। किस दिन कौन सा चूज करना है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू, सी दिस इज 15,700 का पी, इसका एक हार्मोनिक होता है, एज यू कैन क्लियरली सी दिस, ये अप गया, फिर यहाँ से अप, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में आप लोग क्या होता है, या तो यहाँ बाय करते हैं, या यहाँ बाय करेंगे, या यहाँ बाय करेंगे। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट, तो फिर आप लोग को हाउ मेनी ऑफ यू फील कि वंस यू बाय then only it starts moving down whatever the option is, be it nifty and bank nifty, just write in the chat box. It actually happened with me in the beginning but ऐसा होता है। all you have to do is you have to see what the harmonics are। यहाँ पे हार्मोनिक्स आप क्लियरली देख सकते हैं, डाउनवर्ड की साइड में था, तो उसके हिसाब से देखना था। ठीक है, कौन सा पार्ट रिपीट करना, अभी तो मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया। प्राइस एक्शन इज गुड, बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उस बेसिस में जब आप समझेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर ट्रेड। I generally trade, I'm an intraday trader, as I said, I trade on the hourly chart। आप देखेंगे मेरे सारे ट्रेड they are majority on hourly chart। hourly chart stochastics, this is what I see, उस बेसिस में I make a trade। ठीक है, ठीक है नवीन कुमार जी, मेरे जितने ट्रेड होते हैं वो जनरली आपके आवरली चार्ट पे होते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर इंट्राडे, या फिर 5 मिनट्स में होंगे। दूसरा वन इंडिकेटर विच आई यूज स्टैटिस्टिक्स। तीसरा आई यूज ऑप्शन चेन हर स्टॉक के लिए। तो LIC कल ही लग गया था कि इट विल हिट 336, बट कल नहीं गया, या आज चला गया, भले ही मार्केट गिर रहा था, इट वेंट आई। तो उस चीज का है। देखिए, सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच आर इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। So most important thing is for intraday trader, first of all the most important thing पहली है the how to select the stocks। Okay, so am I not visible? Just wanted to know, am I visible now? Hello? Yes, I cannot see you. I think. Am I now? Actually camera, I don't know what is actually happening. Camera supposed to be working. Am I visible? Just a minute, oh just give me 5 seconds. All right, no issues, sir. I'll check that again. Okay,
Am I visible now? Again, not visible. Okay, let it be. I'll try again. Okay, so not visible. Just let me stop the video and then try doing that again. I don't know what is actually happening. Sometimes it makes it visible, but sometimes not. Is it now? Actually, I've joined it from a different camera, so I'll do is I'll disconnect and re-enter again from the device. So what I was discussing is कि what kind of indicators you use. हाँ, I was discussing was कि what is the most important aspect in trading. कोई बताना चाहेगा कि सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप इंट्राडे में हैं. Am I visible now? ट्रेंड. ओके फाइन. ठीक है, ट्रेंड तो बहुत है. यस, वेरी गुड आंसर मिस्टर कल्पू जगड़ले. इट इज अ वेरी गुड आंसर. स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक? मार्केट गिर रहा था, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, LIC ऊपर जा रहा था, बजाज फाइनेंस ऊपर जा रहा था, ITC ऊपर जा रहा था, बट मार्केट वेंट डाउन हेवीली. तो उस चीज को आपको देखना है. इट इज नॉट ओनली अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस. टेक्निकल ट्रेडर्स व्हाट दे डू, दे सिंपली डू वन थिंग. व्हाट दे डू इज कि बस वो देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, इस लाइन के ऊपर बाय करेंगे, इस लाइन के नीचे सेल करेंगे. बट दिस इज नॉट व्हाट आई डू. व्हाट आई डू इज कि मैं एकदम सुबह ही मुझे आई नो कि मुझे कहाँ लेना है, कहाँ सेल करना है. तो उस चीज पे ओके, साउंड तो मैं कर लूंगा. Am I visible now? Actually, something is happening. I don't know what is actually happening. I'm not able to like my my camera is open, but I'm not visible. Sorry for the same. I have recent again. So let's start with the class itself. So as I said, we'll be understanding what are options. ठीक है, तो ऑप्शन बहुत अच्छा तरीका है पैसा गंवाने का भी और पैसा बनाने का भी. ठीक है ना, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, तो और जैसे कि आपको दिखाया था कि आई सेड आज पेट्रोनेट में आई गेव अ बाय इन द मॉर्निंग. तो पेट्रोनेट ऐसा था कि ये अच्छा चला भी है डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट डाउन था, इट वेंट अप. और ये और ऊपर तक जा सकता है. आई डोंट नो इफ यहाँ से यहाँ तक तो जाना है सर 224, तो इट इज सपोज टू फिल दिस गैप, तो आ जाएगा. ठीक है ना, मे बी थोड़ा सा करेक्शन लेके वॉट एवर इट इज, बट इट वॉज अ गुड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो आई फॉलो ऑन टी इंडिकेटर्स एज आई सेड. स्टॉक है जिसके बारे में मैं सेकंड हाफ में बता दूंगा. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेनिंग अबाउट द दिस पार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है ना, तो बेसिक्स में जब भी किसी में डाउट होगा, एनीबडी इफ यू फील एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट लेट मी नो, be it language or be it any concern with respect to the concept we can share. So suppose there are stock and options. As I said, there is Reliance, the price is 2283. If you buy 250 shares, the price would be 5.7 lakh. It is a hypothetical price, ये वाला 2283 का. If it moves by 20 points, you will be having 0.8% profit. Call option अगर आप buy करेंगे, it will cost you around 20,000, but if it moves by 20 points, your profit will be 12.5%. That is what the option is all about. But जाता भी उतनी स्पीड से है, so you have to give the proper stop losses. And when to buy to capture the momentum, options are the best. Now, why options is used as trading? One is like for the purpose of hedging. This is not the part, इसे हम अभी नहीं समझेंगे. Second is significant gains from small capital, as I explained पिछले वाले में. Consistent monthly income. How it would be consistent? If you make money on a regular basis, even if you are actually making 1:3. I mean 1 point for loss and 3 point for profit. Even if you hit 5 stop losses in 10 days, still you will be in plus. That's why. Now, so what are options? So we'll be covering it with an example. See, suppose there is a property. The price was worth rupees 10 lakh. Okay. So there was a seller, there was a buyer. So the buyer tha, he had some information that nearby to this property an airport and a mall is going to be constructed. So definitely it is going to increase the price of the property. But he had only 99,000, suppose 1 lakh rupees. He didn't have 10 lakh rupees. So he went to the seller. He asked that he want to buy the property. And you would also be knowing about the token amount concept. That once you give a specific token amount prior renting to a place or prior buying to a place to the seller, so that there is like a kind of an informal bond that the seller is bound to like sell property to the person who has actually paid the token amount. So he said that pay me 99,000 as a token amount, and after 30 days, give me one at 9 lakh 1,000 rupees. So he said yes, he paid in 99,000. Now he doesn't have anything to lose. He speculated.
Suppose now there is one more thing with this token amount. If the buyer is not able to pay the remaining 9,01,000 rupees within prescribed period of 30 days, this 99,000 will be forfeited by the seller. And yes, this is also one thing. Now what happened is, he said 30 days is your expiry. Within 30 days, you have to fulfill your obligation of paying me 9,01,000. What happened? After 15 days, airport construction started, and malls construction also started, which was speculated by the buyer. Now, property ka price would shoot up. The new price of the property was 50 lakh. So what happened? Now, but this particular seller is bound to sell this property to this buyer at rupees 10 lakh because he has already received the token money of 99,000. What he would be doing? Suppose there is a person C who is interested in buying the property. He'll take 50 lakhs from that person, the buyer, pay 9,01,000 rupees to the seller, and keep 40 lakhs in his pocket. What he did, he just speculated the price is going to be up. He had certain kind of information. That is what actually happened with options also. Now, how to compare with this example? There is also an expiry of stock options. It is like the last Thursday of every month. Yesterday was the last Thursday of this month, so yesterday was the expiry. If on the expiry day, whatever you have like speculated, if it doesn't it doesn't happens, it actually becomes zero or it is actually forfeited. That premium, that token amount is equivalent to the trade premium both. That I'll explain आगे जाके. So this example को याद रखेगा, then I'll tell you कि how to compare this example with the options of stocks. Now view in options, buy call. See, there are two. I mean, suppose market may a particular price, a particular share is going to move up. What you will do? Either you have to buy the share or you can buy call option. There are two options: call and put. If you are bullish, you buy call. If you are bearish, you buy put. These two are terminology that we will be also covering in the terminology. Okay. Now, what are options key definitions? It is a financial instrument with a time value of an underlying security. What would be the underlying security? FNO stock, future and option. Not each and every stock has future and option available. There are only limited stocks which have FNO. So if you Google it, FNO stocks in NSE, you will get the list. The underlying security could be commodity. We have crude, gold, and their options also available. The underlying security could be Forex, GBP, USD, INR. All pairs are there. They also have like options. Now, I said it has a time value. Now, consider the previous example. I said that within 30 days, he has to pay, that particular buyer has to pay 99,000 to the seller. So that 30 days was the time value. That is equivalent to last Thursday of every month. This month, that I guess the last Thursday is on 20th of this month. So 28th or 26th, whatever it is, would be the expiry. Now, time has a premium which buyer will pay. What is that premium? Equivalent to the token amount for the property. That is equivalent to premium. Used as hedge, you can skip this part. Now, these are important terms for the beginners. Now, what is a call? As I said, when you are bullish, you buy call. What is the definition? It allows holder to buy stock at a stated price within a specific period of time. Come in lot size. Now, what is the stated price? Now, in the previous example, the property price was 10 lakhs. He paid 99,000. Property went up to 50 lakhs, but still he paid 10 lakh rupees. Why? Because he gave him a token amount worth 99,000 and freeze that property. The same also happens with options. It allows you to buy stocks at a stated price. That stated price का हम discuss करेंगे through strike. थोड़ा सा difference है उस example के साथ. क्यों खरीदा उसने 10 लाख में ही क्यों प्रॉपर्टी दी अगर उसकी 50 लाख हो गई थी? Because they already have an agreement. The same happens in calls. But ज्यादा definition को हम deep में discuss नहीं करेंगे. All you have to understand is if you are bullish on something, you buy a call. कौन सी कॉल है वो मैं आपको बता दूंगा. Comes in lot sizes. Lot sizes means मैं आपको example में भी दिखा दूंगा क्या इसका कितना क्या lot है. If you buy Reliance का call, there is a fixed lot size of 250. If you buy Tata Motors का lot, there is a fixed lot size of 1450. This is the only. Now what about put? Allows holder to sell stock at a stated price within a specific period of time. The same happens with put. अगर आपने किसी if you have like bought a put of Reliance at 2500 और वो 2300 चला गया, still you will be able to sell it at 2500.
Why? Because you already have four. डेप्थ में नहीं जाना है अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमें तो वी हैव टू ट्रेड द प्रीमियम. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू आर बियरिश विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, यू हैव टू बाय पुट. द ओनली डिफरेंस इज कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा वो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में. कौन सा डिसाइड करना है दैट आई टेल यू. व्हाट इज द स्पॉट प्राइस? करंट प्राइस ऑफ अ शेयर. आई मीन with between 9:15 to 3:30 the price fluctuates of a share. So at any point if somebody says what is the spot price, जो price चल रहा होगा that would be the spot. Now what is the premium? It is the value of the call put which is generally used and its price dependent upon whether the strike price has intrinsic value. थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है जिसे हम अगले में डिस्कस करते हैं. प्रीमियम इज व्हाट जो 99,000 उसने एज अ टोकन में पे किया था, दैट इज व्हाट द प्रीमियम. बस आपको ये समझना है वो प्रीमियम का प्राइस क्या होगा, दैट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड. कि लॉट साइज से आई विल एक्सप्लेन यू किस तरह से कि उसे कैसे बाय किया जाता है. ओके सो मैं आपको यहाँ पे आई विल शो यू वन एग्जांपल आल्सो सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. उसके बाद हम नेक्स्ट में भी चले जाएंगे. लेट्स check this. So this is what it is all about. Suppose I gave you the example. This was LIC. ठीक है ना. So I also bought LIC का 330C yesterday. So I was expecting it to hit 15 or 16. वो उसने hit कर ही लिया. Now ये 330 क्या है वो तो मैं आपको भी explain कर दूंगा. उससे पहले I'll show you one thing. कि if you buy this, the lot size is 2000. Now what would be the price of this option? 2000 into 70. That would be 34,000. बट yesterday what was the price, ये भी आपको देखना होगा. यानी पर 1 rupee gain में you will be getting 2000 rupees. Yesterday it closed at 11.3. Today's low was 8.25. अगर किसी ने 9 पे खरीद के 17 में बेचा होता तो he would have how much he would have made? 16,000 rupees. और LIC, how much LIC gained today? It gained only 3% if I am correct, somewhat around 3.56% इसने गेन किया. और ऑप्शन में कितना गेन आया? significantly almost double हो गया अपने लो से. That is why option are high return bearing. This is what the thing is. So this is the lot size. Now this is the Reliance का था. If you see the lot size is 250. ये कितने में पड़ेगा? 250 into 10 2500. ठीक है ना. तो अब ये सिर्फ आपको शो करने के पर्पस में है. That I'll explain again कि कैसे इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या होता है क्या नहीं होता. So just wait for it. I'll show you one more thing. Now this is premium. Now, what is the strike price? I showed you 330. That is strike price. ठीक है ना. अब प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल में he just speculated the price is going to rise, but उसको बैंड फिक्स नहीं था कि how much it is going to rise. But as per NSE, for every 1.5% there is a strike available. Now, what is the strike price? Defined price band for which share price has been betting against a call. As I said, bullish में call, bearish में put. ये टाटा मोटर्स का एग्जांपल है. 360, 370, 380, these all are strike prices. See, 1.5% अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट या 2% समथिंग, तो करीब 8-10 रुपए आ रहा है. तो 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440. These are all the strike prices. अगर किसी को लग रहा है कि टाटा मोटर 400 के ऊपर जाएगा, सेल बाय 400 का कॉल जो कि 47 में चल रहा है. किसी को लग रहा है कि somebody is speculating Tata Motors going to move down, he will buy 400 का. If it goes back to 360 तो ये भाग जाएगा. If it goes for 440 ये भागेगा और ये गिरेगा. Vice versa. बस इसमें in the property example and here the only difference is जैसे it is like Russian roulette, उसी टाइप से है कुछ. Already strike price are defined. You just have to bet where you are going to go. बस इतना आपको याद रखना. Any doubt with respect to the same? अभी strike price में थोड़ा confusion हो जाता है. Yes, sir. Rajveer sir is asking, how do you shortlist the script? See, this is not part of the this particular this boot camp which we are taking. ठीक है ना. वो अलग चीज है. That is different. वो अभी से करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है ना. तो पहले let's understand what the options are all about. Okay. तो वो अभी बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया. So any जो beginners हैं, if you have any doubt with respect to understanding the same, just let me know in the chat box. ठीक है ना. मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ. For LIC also, LIC का जो मैंने खुद ट्रेड लिया था तो I'll explain you with respect to that only, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या है. Now see, suppose I'll show you here. Now this is LIC. If I type 3, 2, now see 320 का CE, 325, 330,
सब आ जाएंगे आपको यहाँ पे. बोथ कॉल एंड पुट आर अवेलेबल. नाउ सी दिस इज 330. लॉट साइज इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड बाय एनएससी. आप जब इसमें क्लिक करेंगे यू विल सी 2000. नाउ एक चीज जो एक्सप्लेन करनी है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन. इट इज जो अगला स्लाइड में ही है, प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज. नाउ व्हाई डिड आई बाय 330? बिकॉज प्राइस उसके पास जा रहा था. वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा एटीएम आईटीएम का कॉन्सेप्ट, तो उससे आपको समझ में आएगा कौन सा लेना चाहिए. ओके, सो जस्ट टू शो यू द एग्जांपल कि इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज कि किसका कितना है. देखो 350 भी है, ओके 250 भी होगा, कॉल भी पुट भी एवरीथिंग इज देयर. 5 के मल्टीपल में देयर आर अवेलेबल. ऑल यू हैव टू डू इज यू कैन क्रॉस चेक इट एनीवेयर. नाउ नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि अब आपको लग रहा होगा कितने का ऑप्शन आएगा. ठीक है, सो पहले तो क्या प्रीमियम, व्हाट इज एक्चुअली प्रीमियम. प्रीमियम में होती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू. एज ए सेट, ये जो टाइम वैल्यू है ना, इट एक्चुअली डिकेज, ये डिके करती है. प्रीमियम इनटू लॉट साइज इक्वल टू प्राइस ऑफ द ऑप्शन. ये साइज की जगह इट इज प्राइस. नाउ इफ यू आर सपोज टू बाय एनी ऑप्शन, लाइक सपोज इफ यू वांट टू बाय LIC 330 का सी, वी हैव ऑलरेडी सीन कि इसका जो लॉट साइज था 2000 था और उसका लो था 9 था. इफ यू हैव बॉट इट एट 9 into 2000 इज हाउ मच. यू वुड हैव इन्वेस्टेड 18,000 रुपीज, और वहां से वो गया 17 तक. तो पर रुपी में 2 पर 1 पॉइंट के इंक्रीज में आपको 2000 रुपीज मिलेंगे. तो कितना हो गया 16 में अगर आप निकलते तो आई एम एज्यूमिंग 7 पॉइंट से यू हैव कैप्चर्ड 7 टू 14,000. दैट्स व्हाई ऑप्शंस गिव यू हाई रिटर्न. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो एनीथिंग एल्स जो आपको अभी तक ये स्ट्राइक प्राइस है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. मतलब कोई डाउट है इससे तो जस्ट लेट मी नो, पर्टिकुलरली दोज हु आर बिगिनर्स. आई नो दैट पीपल हु आर already like intermediate level in trading, they would be able to understand, but So, for the yeah, we have a doubt with stock selection. मैम स्टॉक सिलेक्शन अभी तो हम सिर्फ ऑप्शन के करेंगे ना, तो थोड़ा सा लास्ट तक का वेट कर लिए फॉर Q&A सेशन. द क्लास एक्चुअली वी आर डीलिंग इन क्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन. तो ये ऐसी चीज, ये वाले क्वेश्चंस मत पूछो यार अभी कि कहाँ स्टॉक सिलेक्शन. दैट इज अ डिफरेंट एंगल, दैट इज अ डिफरेंट गेम. आई सेड आई यूज प्री वॉल्यूम, आई यूज चार्ट. वो लास्ट में Q&A सेशन होगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ठीक है ना, तो आप वहां पे पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ट्राई करूंगा. ठीक है, हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट. देखो पर 1 पॉइंट के मूव में 0.45 का मूव आता है. ठीक है, और कौन से वाले में, पहले एटीएम ओटीएम पढ़ेंगे, फिर बाद में आपको बताऊंगा कहाँ पे कितना मूव आता है. 0.45, नॉट एवरी ऑप्शन इज गोइंग टू मूव 0.45 फॉर 1 पॉइंट ऑप्शन. 1 पॉइंट मूव. 340 विल मूव एट 0.35, 350 विल मूव एट 0.25. ठीक है, स्ट्राइक प्राइस इज सिंपली द प्राइस यू आर एज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू मूव बियॉन्ड दैट पॉइंट. नाउ सपोज कि 320 अगर आपका 325 इज द प्राइस वाज ऑफ LIC, I'm expecting it to move to 336, so I bought 330 का call. You can also bought, you could have bought 340 का call also. So it is like the predefined prices for which you can actually make a trade. You are actually speculating. ठीक है मिस्टर अशोक जी, जो मैंने आपको भी एग्जांपल भी दिखाया. तो स्ट्राइक्स डिफरेंट अवेलेबल हैं. दिस हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड बाय द NSE. 1.52% के अवेलेबल पे यू कैन गेट ऑल दिस स्ट्राइक्स. ओके, now this is the example. Now premium का कैसे डिसाइड होता है, how this premium has already been decided. Now there is intrinsic value and there is time value. Suppose कीजिए this example has been from 16th of May. Tata Motors price was 418, lot size was 1425. 400 का C was at 20.25. इसका प्राइस कितने का होगा 1425 into 20, almost 29,000 or 28,500. Now इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, टाइम वैल्यू कितनी है. इसमें दो पार्ट है. There is one intrinsic value and there is also one time. There is a formula. I'll also explain you how to find it out without formula also. See, 400C 22, 420C 6.5, 400P 4. Write it down for CE के लिए. All you have to do is spot price minus strike price. Spot कितना है 418, strike कौन सा है 400 call के केस में. ये for call के लिए है 400. Difference is 18. This 18 is your intrinsic value out of 22. रिमेनिंग 4 इज योर टाइम वैल्यू. दिस विल डेप्रिशिएट और एक्सपायरी तक आते आते वो जीरो हो जाएगी. बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू 18 है इट विल रिमेन द सेम. अगर एक्सपायरी लास्ट थर्सडे में टाटा मोटर इज एट 418, दिस ऑप्शन वुड बी इवेंचुअली टर्न टू 18. बट अगर सपोज 420 का स्ट्राइक होता
418 minus 420 वैल्यू इज नेगेटिव. इट मीन्स जो भी उसका प्रीमियम होगा दैट वुड ओनली बी टाइम वैल्यू. पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट रिवर्स कर दो. पी के केस में व्हाट इज द स्ट्राइक 400, व्हाट इज द स्पॉट 480, वैल्यू इज नेगेटिव और इसकी प्राइस कितना है 4. इट मीन्स इट इज प्योर टाइम वैल्यू. इफ टिल एक्सपायरी दैट इज लास्ट थर्सडे तक अगर प्राइस यही रहेगा इट विल बिकम जीरो. दैट्स व्हाई इट इज रिस्की. ओके, तो प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू है. आई मीन इट्स 6.5 है या 22 है. देयर आर टू एस्पेक्ट. देयर इज वन इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी वो प्राइस गिरेगी नहीं, बट प्राइस अगर वहीं रहा तो ये वहीं रहेगी, लेकिन टाइम वैल्यू डिके करेगी और ये बढ़ती भी है और घटती भी है. अगर ये 440 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगी, टाइम वैल्यू के साथ समथिंग 45 हो जाएगा. दैट आई एक्सप्लेन. बट उससे पहले देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. वो ट्रेड में कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, दिस विल हेल्प यू थ्रू. ओके, सो लेट मी मूव ऑन टू द टर्मिनोलॉजीज का सेकंड वाला पार्ट. दिस इज नाउ दिस इज एटीएम, आईटीएम एंड ओटी. एटीएम का मतलब एट द मनी. If strike price equal to spot price. Spot price means the price at which it has closed or what is the price to prevail कर. अगर टाटा मोटर 400 हो गया तो 400 सी एंड पी वो आपका एट द मनी होगा. बट वी आर नॉट सपोज टू यूज. इसके कोई काम नहीं. काम है इन दोनों का, आईटीएम एंड ओटीएम. आईटीएम मीन्स इन द मनी, ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी. आईटीएम क्या है? इफ देयर इज एनी इंट्रिंसिक वैल्यू देन आईटीएम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फॉर्मूला. यूज दैट. इफ देयर इज एनी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव में इट वुड बी आईटीएम. OTM means if there is no intrinsic value, then it will become. Yeah, ma'am. Sorry to interrupt. No We issue. have two questions. Sheikh sir is asking, आज का सेशन बेसिक्स पर ही है क्या? नहीं, Should I actually, leave या आगे कुछ एडवांस है? आगे एडवांस भी है, but since there are different spectrum of people available, some are intermediate, some are basic, and I have to cater to the need of both. So I don't Yeah, want right. the basics. I don't want the like beginners to get demotivated and overwhelmed in the beginning itself. I can start from the advanced version. But the point is the class is also supposed to be the people who are starting from scratch. So just hold on to some minutes, like 20-30 minutes, and we'll definitely moving on. और उसके बाद हम जो ऐसी जब strategy discuss करेंगे, so that the people who are actually beginners can actually वो भी understand it. Correct, sir. We have to take everyone with us, starting from the beginner. Yes. There is also one question. What is break-even point and how to calculate it? देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट आर जनरली कंसिडर्ड फॉर ऑप्शन सेलर्स. वो अभी मत कीजिएगा. या फिर जनरली व्हेन देयर इज एन आर्बिट्राज और व्हेनेवर देयर इज लाइक अ हेज्ड कॉल, जब आप कॉल पुट दोनों खरीदते हैं या कॉल खरीदते हैं कॉल सेल करते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफरेंट. तो वो जब सेलिंग का होगा तो आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो उस चीज को आप छोड़ दीजिए. And also, sir, intrinsic value maximum कितनी चाहिए, sir? दैट आई विल एक्सप्लेन. इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे से डिसाइड नहीं होती है. वो ऑप्शन की जो प्राइस मूवमेंट होता है दैट डिसाइड द इंट्रिंसिक वैल्यू. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फॉर्मूला. जो सी के केस में ऑल यू हैव टू डू इज स्ट्राइक माइनस स्पॉट, और उसके सॉरी सी के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक और उसमें स्ट्राइक माइनस स्पॉट पी के केस में. दैट आई अगेन वो आपको मैं स्लाइड आपको मिल जाएंगे इसमें. बट आगे मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि बिना फॉर्मूले के भी आप पता कर सकते हैं व्हाट वुड बी द इंट्रिंसिक वैल्यू. तो ट्रेडिंग के लिए ओटीएम, नियरेस्ट ओटीएम. yesterday LIC was 325. I bought 330 because it was out of the money. अब आप फॉर्मूला लगाइए, कितना प्राइस चला था 325. व्हाट इज द स्ट्राइक 330. 325 minus 330 value is negative. It was out of the money. But suddenly if it becomes ITM, there is a fast movement. Choose the stock or the option whether it is put or call if it is going to become ITM. Nearest OTM which can actually become ITM. This is what you have to do. ठीक है. Now ये डिस्कस हमने ऑलरेडी किया था. सी के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक, पी के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट. ठीक है. नाउ अब बिना फॉर्मूले के कैसे कैलकुलेट करनी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट आई विल एक्सप्लेन. नाउ सपोज दिस टाटा मोटर्स लास्ट मंथ का है. ये आईटीएम है, ये ओटीएम है, आईटीएम है, ओटीएम पुट के केस. दिस इज कॉल 400 सी 20.25. इज द प्राइस above 400? Yes. How much point? 18. Intrinsic value is 18. Rest 2.25 is time value. It is in the money. Is the price of 380? Yes. How many points? 38. 38 is the intrinsic value. Because expiry पास में थी उस टाइम 16 10 दिन ही बचे थे, that's why थोड़ा वैल्यू कम है. Now put कॉल के केस में
420. Is the price above 420? No. It is OTM. Is the price above 440? No. अगेन हिंदी में बताता हूँ, 400 के ऊपर है कितना प्राइस? 18. 18 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए इन 380 के ऊपर है 38. 38 का डिफरेंस क्या है, इसलिए इन पुट के केस पर रिवर्स कर दो. इज द प्राइस बिलो 400? नो. प्राइस इज 480. इट इज OTM. इज द प्राइस बिलो 420? यस. बाय हाउ मच डिफरेंस? 2. 7.95. बाकी इसमें टाइम वैल्यू है, 2 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर 418 रहा ना, तो ऑप्शंस में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी जो आइटम होंगे, बाकी ये सब जीरो हो जाएंगे. दिस वाज जीरो, दिस वाज जीरो, अगर प्राइस यही रहा. और 400 कितना रहेगा? 18. 380 हो जाएगा 38. इज द प्राइस बिलो 440? यस. बाय हाउ मेनी पॉइंट्स? ऑलमोस्ट 32. एंड इट इज 35. दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज ऑल अबाउट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेजर एस्पेक्ट. अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है कि इसमें जो बिगनर्स है, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, just with respect to any doubt. Okay, so let's move on to the next part. Now, what is the difference, like how you have to make a trading option buy? You have to buy CE when price is about to move up. Somebody asked what, how to put the SL. Nearest OTM call, which is going to become ITM, 1 rupee price the movement will cater 0.45 the movement. This you have to remember. So on the basis of that, you can actually put SL also. That I'll also teaching you in option Greeks, and if I get the time in the second half, I'll explain you option Greek with delta also. That how we put SL on the basis of that. Now the price movement in all the stock prices changes. So that's why there is changes in the premium prices. So that's how you can actually make a trade. So simply if I show you, I have already shown you in the example for LIC के case में ही, you can clearly see this is LIC का 330 का CE. LIC was at what? 325. I speculated that it will move below, above, sorry, 330. That's why I trade. Now this is a 5-minute chart. This was the low 8.5 and it went the high up to 17.8. See, there are price differences also. So that's how you trade. Because LIC moved, that's why its option on the call side moved. Vice versa is true with the put. That would have gone down. So that is also the aspect which you have to consider in mind. Now, ये चीज हमारा कवर हो गया है. These are the basics of options. Since many would be waiting for this strategy which I'll be discussing. So उससे पहले we will be discussing about the candles because the beginners would like to know what is candle. So just for the sake, what is the close for the candlestick? Just let me know. Write it in the chat box. यार थोड़ा सा ऐसा होता है ना, if I use English, somebody say use Hindi. So I'll explain the concept in both English and Hindi. Just let me know. 118. Okay, so let me guess. सबसे पहले आंसर किसने दिया है? Just wanted to see. देखो, you will, if you are answering, you will be definitely be eligible for the price. But since Mr. Triple 4 times say, Mr. 4 times say, you will have my number. Okay, so I'll be adding you in my WhatsApp advisory for 1 month for free. You can make trade basis of that if you want. Okay, so this is my WhatsApp number. I've already given you. You can save it. Message me hi and write your name. I'll add you there and you can make it. Yeah, definitely. Sure, Mr. 4 times. See, this is I gave him the number because he was the one who responded the first. Okay, so that is why I just wanted to see how many of you are attentive. So person who are actually attentive should be rewarded. Now let's move on to the next step. Now, what are actually candlesticks? It is like the cricket base. And there is a top, there is a bottom. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, basis of close and opening. But this is a general candle. There are two color, red and green also. Now there are 4 data sets in a candle. जो top है, this is the high. जो bottom है, this is the low. ये जो बीच के parts हैं, there is no data in them. Now the point where is certain breadth is there, that is the top point, and this point. These are 2 data sets. They can be either close or open based on the color. Okay, this is high, this is low. These two could be either opening or close. Now let's see. Agar green, if the color of the candle is green, now what is the candle? See, 1 day movement of a share price, or 5 minute, 10 minute, 15 minute, whatever the price frame you choose it. I chooses 1 hour to 1 hour, whatever the price would be there, it will be described in a candle. So I am considering this as a daily candle. 1 day ka ek candle in average stock. Now this would be high, this is the low. For green, remember, for green, top would be the closing point. For red, closing would be on the lower side. Red matlab share has fallen down. Now I'll take one example and I'll show you, so that you will be able to understand. Okay.
So let's say LIC also. See, this is 5-minute candle. I'm just changing the frame to 1 day. What this signifies? This is the low. ये low है. This is okay. So let's take looping. Low is 609. Opening was where? 612. This is what? 627.37 is what? Closing. And 630 is what? Your high. I said opening और closing जहां है उस basis में आप देख लीजिए. ठीक है, ये ग्रीन है तो दिस इज द क्लोजिंग. रिमेंबर, ये रेड था तो यहाँ क्लोजिंग था. एंड सी दिस 627.3 इट डिटरमाइंस एक्चुअली शोइंग यू व्हाट द क्लोज वाज. I guess this is the very basics of the candle. You might be able to understand. Any doubt with respect to candle? अगर नहीं है तो we'll begin. I guess हो ही गया होगा इसमें. This is very basic. So let's see. Green में यहाँ closing है, red में यहाँ the closing. Now, what is the close of the candlestick? 126. Okay, good. You are actually getting. This is a good thing. Somebody said not understand. Okay, see, 1 day का frame में you are actually describing a movement of a share. This is the top point. This is the bottom point. ये high होगा share का, ये उसका low होगा. This is the high of that share in that very interval or very day. This would be the low. This could either be opening or closing depending upon the color. If the color is green, the share would have been closing at this point. That is 126. If it is red, now the closing price would be 120. This is the simple thing. Okay. तो मैं आपको इसमें बाद में भी एग्जांपल लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल चीज है. नाउ यार एडवांस लेवल में वी विल बी मूविंग ऑन. जस्ट वेट, होल्ड ऑन अ मिनट. थोड़ा सा बेसिक में लोगों को नहीं होता है. नाउ वी आर एक्चुअली, ये जिनको एडवांस में आता है ना, पीपल हु आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ वेरी एडवांस लेवल, अगर मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. मैं ये भी बता सकता हूँ कल कहाँ मूवमेंट आएगा, बट आप लोग सीधा छलांग मार के छत पे जाना चाहते हैं मारियो की तरह. सीधा यहाँ से हम मारियो जा सकता है क्या? यहाँ से इस पॉइंट तक. सी यू हैव टू लर्न ऑन द बेसिक्स. पहले क्लियर कर लो अपने बेसिक्स को, देन उससे बेटर हो जाएगा. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मैंने आपसे पूछ लिया ना, जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर समझते होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट. आई एम वेरी श्योर. वो बस ऐसे ट्रेड बनाएंगे कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा. सो टेक सम लाइक, इसमें थोड़ा सा बेसिक ध्यान दीजिए. दिस इज द मारियो. ही हैज टू जंप टू दिस लेवल, देन दिस, देन टू दिस लेवल. From this to this break, if he is not able to jump here, he would fall back to this region. ठीक है, चलिए, suppose he jumped and maintained at this level. He is trying to jump from this level to the highest point. If he fails, he'll land back to this level. Not here. Why? यहाँ से यहाँ तक this was the resistance. When he cleared it, it becomes the support while jumping from this to this. This is what the stock market, this is what the stock is all about. अगर यहाँ से यहाँ जाता है, नहीं गिर जाएगा तो यही गिरेगा. Once it crosses this level, if it tries to achieve this level, it will fall to this level. Now, I'll explain you with examples. The example इससे दिया था because support and resistance, they both are what? The siblings हैं. This is the only thing. Now, किसका discuss करना चाहते हैं support and resistance? Just write it down in the chat box. कुछ लोग के there would be some like favorite stocks also. Anyone? Anyone कोई stock का बताएंगे या मैं ही ले लूँ? निफ्टी, चलो निफ्टी का ही ले लेते हैं. रिलायंस, टाटा मोटर. ओके, टाटा मोटर 404 तोड़ता है, 48 जाएगा, फिर 413, फिर 419, फिर 424, फिर 432, फिर 438, फिर 440. सी मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे याद है. somebody said टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा का लेवल याद नहीं. सी आई टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, यार निफ्टी का ले या स्टॉक, चलो लेट्स टेक निफ्टी का itself. somebody said nifty, so I'll taking nifty also. I'll be taking one stock also. Okay, so this is what nifty looks here. So let me check one day example. Just let me scroll it down to make it visible to you guys. ठीक है, मैं आपको एक चीज को दिखा देता हूँ. Okay, this is what the daily chart of nifty. See, मैं क्या कर रहा हूँ? I'll be considering levels of what is the date 2022. हम 2021 पे पकड़ते हैं, यहाँ से ज्यादा अच्छा. This is 21. Okay, I'll be taking these words. 22 में it is going to be extrapolated. How? Now, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. Then I'll let you know कि कितना, मतलब it is not very difficult. ठीक है.
सो आई सेलेक्टिंग लाइन। यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा था, मारियो ही है, यहाँ से कहाँ से गिर जा रहा था, यहाँ से गिर जा रहा था, वेंट अप, यहीं पे गिरा, देन इट वेंट डाउन, कहाँ गिर रहा था, इस पॉइंट पे। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इनको आप कंसिडर नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अवॉइड, दिस इज लाइक एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। ठीक है, नाउ इट जम्प्ड, यहाँ पे इसने ले लिया, देखो यही इसका सपोर्ट बन गया, दिस वाज द रेजिस्टेंस, देन अगेन इट जम्प्ड, दिस वाज द रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट बन गया, इट जम्प टू दिस लेवल, ऊपर 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 एक यहाँ पे लेवल गया, देन दिस वाज द रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये जंप कर करके इस पे ले रहा था, फिर यहाँ तक आया, अगेन नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस निकला, ऊपर गया, ऊपर गया, अब यहाँ पे गैप्स हैं। ठीक है, ये आई जस्ट क्लिकिंग ऑन द गैप 18,500। अब जिनको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पूछने थे ना, सॉरी ये लाइन थोड़ी गड़बड़ है। नाउ एज आई सेड, अब हम देखेंगे आज का, क्या ये उसी लेवल से नहीं आ रहा है, दिस वाज वन रेजिस्टेंस, दिस वाज सपोर्ट, दिस वाज सपोर्ट, दिस वाज सपोर्ट, आज के लेवल में देखिए व्हाट वाज द सपोर्ट, जो बड़ा लेवल था 15,632, इट वेंट बिलो दैट, वो हमने वहां पुराना कंसिडर नहीं किया था। दिस इज द रेजिस्टेंस 887, नेक्स्ट इज दिस 16,140, नेक्स्ट इज 356, और छोटे लेवल में निकाल लेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। इज देयर एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? मूविंग एवरेज इसके बाद में बता दूंगा, आई एक्सप्लेन। एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग आउट लाइक सपोर्ट एंड, देखिए आप लोग के साथ क्या होता है ना, यू वांट टू एक्ट लाइक पिकासो। पिकासो आपने सुना ही होगा, द फेमस पेंटर। आप सोचते हैं कि एवरी सिंगल लाइन हैज टू बी लाइक कवर्ड, इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द पॉइंट इन माय हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपको नहीं देखना है, ओके आपको पेंटिंग नहीं करनी है यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू स्पेकुलेट, आप देख रहे कहाँ से जंप से गिर जा रहा है। व्हाट एक्चुअली हैपनिंग वाज कि ये दिस पॉइंट वाज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। ठीक है ना, हम एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को डोंट कवर, यहाँ पे एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस गया लेकिन क्लोज वहीं पे ही हो गया। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। देखिए वो कंफ्यूजिंग लग रहा है, आई विल एक्सप्लेन वन मोर सो दैट यू कैन एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो कौन सा स्टॉक में, बहुत सारे हैं यहाँ पे, somebody said किसको कोई कोई वो बता दीजिए, एनी गिव मी द नेम ऑफ अ स्टॉक, आई लेट यू, आई विल एक्सप्लेन यू। फेवरेट लोग का विप्रो के, विप्रो यार उसके की आई डिस्कस 422। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर होगा। अब आपको बहुत सारे, सी आपको सिर्फ ऑल यू हैव टू सी इज द हाई पॉइंट्स। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज एक्चुअली फॉलिंग डाउन, ये आपको निकालना है, द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैज फॉल डाउन। ठीक है, ये दिस इज अ वन डे, आई विल टेक एक साल पहले का। ओके, अगेन यहाँ से ब्रेकआउट जहाँ से आया हुआ, देन आई विल एक्सट्रापोलेट इट, इज इट फाइन? दिस इज लाइक वेयर 2021 का आधे का पार्ट है, यहाँ से विल बी कंसिडरिंग द थिंग। ठीक है, नाउ दिस इज Wipro and I'll take horizontal line and then we'll discuss line horizontal. See, ये मारे हुए तो यहाँ से देखें, दिस वाज रेजिस्टेंस, नीचे नीचे गया था, दिस वाज सपोर्ट, छोटा सा। ओके, नाउ इट वेंट अप, यहाँ पे इसने एक मारा, जब वेंट अप यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया। नाउ यू हैव टू सी इसके हाईएस्ट पॉइंट, डोंट कंसिडर दिस पार्ट, ये एक मैक्रो सपोर्ट है, बट ये माइक्रो सपोर्ट है, वी हैव टू सी मैक्रो वन। ये वाला एक रेजिस्टेंस था, इट जंप्ड ह्यूज, यहाँ से यहाँ तक, इसका लो और इसके हाई को मार लीजिए, इसके हाई को मारिए। ये गैप्स में वी ऑलवेज लाइक की पॉइंट्स, गैप्स को रखना होता है, देखो गैप फिल हो रहा है यहाँ पे। नाउ ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सट्रापोलेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इट जंप्ड अगेन, दिस वाज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, नाउ इट जंप्ड, ये एक रेजिस्टेंस था, ये गैप में हमने क्लिक कर लिया, एक यहाँ पे गया गया गया, ये टॉप पे क्लिक किया। नाउ ये एक लाइन में इसलिए कीजिए, दिस ऑल पॉइंट, these 3 points for lying at once, so I consider this as a resistance. Again it cleared this level, then this, I'm considering only the highest points. Now this, और आगे आइए, this is one resistance, ये वाला ले लेते हैं, and this one, ये एक resistance है, these 3 lines, then a breakout good वाला यहाँ पे, this is the high point, I'm taking it as a resistance, this is, मैं बड़े वाले ले लेता हूँ, और ये टॉप वाला। अब आप इसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं आगे, सी दिस इज व्हाट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर।
यहाँ पर आया है, नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस 33, 54, 64 एंड 50, और आप देखिए फॉल भी उसी तरह से हुआ है, इट इज ऑलरेडी फॉलिंग इन द सेम वे इन दो सपोर्ट, इट इज टेकिंग दीज रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस थे नाउ दे आर एक्टिंग एज सपोर्ट, सिमिलर वे, नाउ दीज आर रेजिस्टेंस। एनी डाउट? आई गेस इट वुड बी क्लियर, ज़्यादा इसे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, दिस इज द पार्ट. So this has already been explained. I guess support resistance has been done. Now majority of you would be like looking for कि sir what was the strategy वाला part. So हाँ एक चीज last बता देता हूँ. What is the trend line? This is the important aspect. So I'll explain किसी एक this is किसी एक share को ले लेते हैं. Like coal pal. This is a coal pal on a daily chart. You just have to connect 2 points and the angle should be more than 45 degrees. All you have to do is select a line. Now this is a trend. एक फॉलिंग ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से आई पिन पॉइंटेड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो दिस वाज अ राइजिंग ट्रेंड, यहाँ से इट ब्रेक दिस ट्रेंड हियर, इसलिए नीचे गया, क्लियर? यू जस्ट हैव टू कनेक्ट 2 पॉइंट्स, देन यू बिकम देयर इज अ ट्रेंड लाइन, आगे हम इसे यूज करेंगे, Right, sir. ओके. So we have a question from Praveen, sir. He is asking which one is better to take as support or resistance, wick or body? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, आप कुछ भी ले सकते हैं बट मेजॉरिटी मैक्रो लेवल पे आपको लेना है, बिकॉज वोलेटिलिटी के केस में जैसे यहाँ पे दिस वाज द सपोर्ट, दिस वाज वोलेटिलिटी, ओके, दिस वाज वोलेटिलिटी, यहाँ पे आप देखिए मेजॉरिटी कहाँ लाइन कर रहे हैं, ये वाला, यहाँ पे विक से थोड़ा नीचे आई एम कंसिडरिंग, बिकॉज ये इस सब लाइनें इससे मेजॉरिटी लाई करती है, मेजॉरिटी पॉइंट शुड लाई देयर, दैट इज व्हाट द थिंग, मेजर ट्रेंड लाइन के लिए यू So, जस्ट, यस मैम, so if it is possible, आप ट्रेंड लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बता देता हूँ, ये एक ट्रेंड, Kalpu sir is asking. इसमें एक पॉइंट पड़ा, दिस इज द हाई पॉइंट, और एक मैंने पॉइंट ये इसका टॉप, दिस इज वन पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मोटा मोटा आपको दिख जाएगा, आई जॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज अ ट्रेंड, इसके ऊपर ट्रेंड ब्रेक हो जाए, ठीक है, और थोड़ा अच्छा देखना है यहाँ से, दिस इज वन ट्रेंड, कनेक्ट एनी 2 पॉइंट्स एंड यूल गेट अ ट्रेंड, ऊपर से डाउन ट्रेंड था, नाउ इट इज काइंड ऑफ शिफ्टिंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स, इसके ऊपर इट विल फ्लाई, इसके नीचे इट विल फॉल डाउन टू सपोर्ट, ठीक है, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट 2 पॉइंट्स, दिस इज ऑल द ट्रेंड इज ऑल अबाउट. नाउ अब बैंक निफ्टी की हमें स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग. बैंक निफ्टी का क्या होता है, देयर इज लाइक स्ट्राइक प्राइस एट एवरी 100 पॉइंट्स, 32,000, 32,100, ऐसे ऐसे होता है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज बैंक निफ्टी, इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ बैंक, इट्स द फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड वी कैन ट्रेड इन ऑप्शंस ऑफ बैंक निफ्टी. सपोज 33,539 है, सो 33,500 होगा, 33,600 भी होगा, कॉल एंड पुट बोथ, ठीक है. इफ यू सी देयर इज बैंक निफ्टी 33,300 एंड दिस इज द प्रीमियम, इसका वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, सो वी विल बी कंसीडरिंग द वीकली के बेसिस में, फॉर ओनली निफ्टी इंडेक्स देयर आर वीकली एक्सपायरी आल्सो ऑन एवरी थर्सडे, इतना आपको याद रखना है. नाउ ये 32,800 है, इफ आई एम एज्यूमिंग कि बैंक निफ्टी उस दिन के एग्जाम से आ गए, उस दिन 32,200 चल रहा है, 32,800 जाने वाला है, so I am buying the call of 32,800. 180 is the premium. 180 lot size is 25. What would be my price? 4,500. 100 point move करेगा तो I'll be getting 2,500 points. ठीक है. Now what is the strategy which I use? India VIX हम use करते हैं. As I explained, it is a volatility index. It is not being traded, but it helps us in making a trade. Now 5 minutes में अगर यहाँ breakdown होगा तो वहाँ breakout होगा and vice versa. 90% time it is true. On the basis of price action, you can actually see the same. Now बताइए व्हाट इज द ऑप्शंस ऑफ बैंक्स कॉल्ड, इसके बाद हम थोड़ा बेसिक देख लें कि आपको पता चला है नहीं. ओके फाइन, नेक्स्ट में मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस आर बीइंग ट्रेडेड इन ऑप्शन, नॉट ऑल द इंडिसेस आर बीइंग ट्रेडेड. हाँ निफ्टी 50, दैट इज राइट. So Nifty and Bank Nifty are both being actively traded. Bank Nifty is the largest, like in terms of volume, it is the biggest exchange. Now this is what the strategy is all about. जो आप लोग को है उसको हम डिस्कस करते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं. जनरली ट्रेड इन बैंक निफ्टी फ्रॉम 9:30 to 11, 12:15, 153. 12 150 में देयर इज अ बम्प, 12:15 में बम्प आएगा. व्हाई? 130 में आपके एफ आई एक्टिव हो जाते हैं. 5 मिनट ब्रेकआउट इन इंडेक्स मेक बैंक निफ्टी और निफ्टी मूव डाउन एंड वाइस वर्सा.
5 मिनट में वहां ऊपर जाएगा तो यहाँ नीचे जाएगा। दिस इज 95 90 to 95% इट इज ट्रू। एक्सपायरी या एक्सपायरी से एक दिन पहले इट डजंट हैपन। यूज आईटीएम, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ब्रेकडाउन होगा हमेशा फ्राइडे को, इफ यू आर एज्यूमिंग दैट मार्केट इज गोइंग टू मूव अप बाय 200 ऊपर वाला स्ट्राइक, फॉर एग्जांपल अभी 32,500 चल रहा है, आई विल बी बाइंग 32,700 का कॉल, अगर इफ आई एम एज्यूमिंग इट इज गोइंग टू मूव अप फ्राइडे को। मंडे को आई विल बी बाइंग 32,600 यानी 100 पॉइंट्स अप। मंडे ट्यूसडे को भी 100 पॉइंट्स अप। वेंसडे को इन द मनी, मतलब 32,500 चल रहा है तो आई विल बी बाइंग 32,500 का कॉल या 32,500 में 500 का पुट। और वेंसडे थर्सडे वाले दिन स्पेसिफिकली 100 या 200 पॉइंट्स बिलो 32,400 चल रहा है तो आई विल बी बाइंग 32,300 का कॉल इन ऑर्डर टू लाइक, ये आपका जो थीटा का डिले होता है या डिके होता है उससे बचने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट विल बी यूजिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट आर द ऑप्टिमम स्टॉप लॉसेस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि क्या चीज है। सो आज के ही एग्जांपल से देख लेते हैं। सो यू हैव टू सी व्हाट आर द लाइक प्राइस एक्शन क्या है, दैट विल आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेम। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये मैं लास्ट में आपको जब Q&A सेशन होगा आई विल राइट यू इन द चैट बॉक्स कि कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या करना है। ठीक है, कि कब कहाँ पे कौन सा स्ट्राइक लेना। फ्राइडे को 200 पॉइंट ऊपर लेना है क्योंकि उसमें आपका डीके फास्ट नहीं होता है। सो दिस इज द चार्ट फॉर टुडे। नाउ सी दिस इज पहली कैंडल इज गोइंग टू बी वेरी बिग। ये दिस सिग्निफाइज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। दिस सिग्निफाइड ब्रेकडाउन, 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 ब्रेकडाउन। पहली कैंडल ये दिखाती है। ठीक है, एंड सी यहाँ आपका ब्रेकआउट, मतलब ये आपका गैप 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 सॉरी ये आपका गैप अप था। तो पहली कैंडल अवॉइड कर दीजिएगा, उसके बाद यू वेट। अगर पहली कैंडल रेड बहुत बड़ी ग्रीन वो बनती ही बनती है। नाउ सी इट वेंट अप, started moving down from here 920 से started moving down। तो बट क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था तो लेट्स मेक द ट्रेड। यहाँ पे देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गिरा है। कहाँ से गिरा है ये आपका, दिस इज लाइक 920 से था, बट क्योंकि ट्रेंड में भी पता नहीं है तो हम कुछ कहेंगे 950 ऑनवर्ड्स इट वेंट अप। बट ये फेक भी हो सकता है। क्या होता है, यू हैव टू सी व्हाट इज द प्राइस एक्शन। नाउ दिस इज 950, यहाँ पे 950 में देखिए एग्जैक्टली इसमें हाई मारा एंड देन इट वेंट डाउन फ्रॉम 231 टू 154। बट ये पॉइंट कैप्चर नहीं हुआ। यहाँ से एक अच्छा इंडिकेशन आया, दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट। 1025 यहाँ से एक कॉल दिखाया, दिस कंफर्म्ड, दिस नेक्स्ट कैंडल एक्चुअली कंफर्म्ड एट 1030। नाउ व्हाट इज एट 1030 पे आपका कितना चल रहा था, दैट यू हैव टू सी। इट वाज हियर at 33,267. Today was Friday, so I would be considering 200 पॉइंट ऊपर वाला and it would be like what 32,400। आप 32,400 को सेलेक्ट करिए। ओके, सो 33,400 तक कॉल, बिकॉज इट इज मूविंग डाउन आई विल बी बाइंग कॉल, क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है तो ऑफ करेगा। आई एम सेलेक्टिंग वीकली वाला, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाला। ठीक है, सो व्हाट इज द टाइमिंग हियर 10:30। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स इन द सेंस अभी आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं वो आप यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है बट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह काम करती है। हाउ, आई विल शो यू। ये आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कीजिए। दिस वाज वन सपोर्ट, दिस वाज रेजिस्टेंस, दिस वाज अगेन। अब क्योंकि ये 10:30 है तो वी नेवर नो कि कहाँ पे गया। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस पॉइंट पे आई एम बाइंग, अगर आई एम बाइंग एट 348 एट द टॉप पॉइंट। वैसे तो यहाँ पे 10:30 है तो 10:30 में आई विल बी बाइंग एट दिस वाला पॉइंट, दिस 338। व्हाट शुड बी माय एसएल नाउ, इफ आई पुट एसएल हियर ये तो हिट होगा। सो 340 पे भी अगर हम बाइंग कर रहा हूँ कम से कम इस पॉइंट पे लगाइए 292, दैट इज 40 पॉइंट्स। मैक्स लॉस 25 का लॉट साइज है तो 1000 पॉइंट का लॉस ले सकते हैं। और सिक्योर होना है 288 लगा लीजिए। ठीक है, नाउ वॉच, इसको आपको कैरी करके होल्ड करना है जब तक इसका ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से गया 375 तक गया, चाहे तो यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। वेट कीजिए, वेट कीजिए। इस ट्रेंड को आप पूरा, अब ये एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक ये रेजिस्टेंस था, फिर एक ये था, एक ये है और फिर इसका हाई। आप यहाँ तक जाइए, व्हेन दिस रेजिस्टेंस ब्रेक इस पॉइंट पे 400, व्हेन यू आर गेटिंग एटलीस्ट 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स, तब एसएल को बाय प्राइस लगाइए। या फिर आप छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करके चले जा सकते हैं, वॉट एवर द चॉइस, इट इज योर चॉइस। ठीक है, दिस इज व्हाट द थिंग इज। एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू द सेम, अब बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन दिस इन रियल एग्जांपल।
Anyone has any doubt up till now? बता दीजिए। कल देखिए, कल तो इट वाज एक्सपायरी, तो कल मैंने बोला कि उस दिन पे क्या होता है ना, यू हैव टू फर्स्ट सी वेदर द प्राइस एक्शन इज आल्सो बीइंग फॉलोड। ओके, मैंने आपको क्या बोला था, विक्स अगर नीचे जाएगा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। आई हैव ड्रॉन अ ट्रेंड, द ट्रेंड इज डाउनवर्ड। इसका ट्रेंड क्या होगा, अपवर्ड। सिंपल, दिस इज व्हाट द थिंग इज। इतना तो याद रहेगा ना, अगर अपवर्ड है कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, फ्राइडे को 200 पॉइंट्स अप वाला। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स में क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप निकाल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है? देखिए विक्स अब ऐसा नहीं है कि लाल हरा बन रहा है और आप ट्रेड ले रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज एन इंडिकेटर, ट्रेंड को बनने दो। ठीक है, yes, it is an analogy which I made on my own. See, I worked in Morgan Stanley, so what they did is we used to short Dow on the basis of S&P VIX. ठीक है ना, so I use the same in India VIX in India। और कल एक्सपायरी वाले ट्रेड्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, टारगेट परसेंटेज इज टिल इट इज मूविंग डाउन। जब तक ट्रेंड नीचे जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट आप निकाल के रखे, एक सपोर्ट ये टूटा, फिर टूटते कहाँ तक जाएगा, आवरली चार्ट में यू हैव टू सी, 3 आवरली चार्ट, ये धड़ाम नीचे जा रहा है, तो वहां तक यहाँ तक सपोर्ट था, आ गया। सॉरी, ये आपको आवरली चार्ट में कंफ्यूजन होगा, बिकॉज आई रेगुलरली मेक ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, तो इसमें सारे चार्ट बने होते हैं। ठीक है, कल का चार्ट कंफ्यूजिंग था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। वाई? बिकॉज कल एक्सपायरी थी तो उतना फॉलो नहीं हुआ। एज ए सेड 90% टाइम इट एक्चुअली वर्क्स। आप करके देख लीजिएगा, मैं पुराने भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये ऊपर गया, जाने की कोशिश कर रहा था, बट ये इसी के साथ मूव कर रहा था, तो प्राइस एक्शन वो स्लाइटली कंफ्यूजिंग था, बट छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यू विल फाइंड इट कि हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। तो ये तो 30th का था, दिस वाज ऑन 29। तो यहाँ पे उतना अच्छा ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, दिस वाज नॉट फॉलोइंग, तो प्राइस एक्शन वाज नॉट देयर, जो एक्सपायरी थी। इससे पहले में अगर आप आएंगे तो इट वाज लाइक ऑन 28 को भी इट वाज फाइन। थोड़ा सा वही एक्सपायरी से एक दिन वाला फैक्टर आया, यहाँ पे पहली कैंडल को उसने ब्रीच किया, इट वेंट डाउन ड्रेस्टिकली। उसके बाद अब इसमें ये नहीं है कि विक्स यहाँ से यहाँ आया है ये ऊपर ही जाएगा, ये नहीं कि विक्स यहाँ से यहाँ गिरेगा तो बैंक निफ्टी जहां से खुला था वहीं बंद हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा व्हाई इट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, देन यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, ये छोटा सा इसमें यहाँ अपवर्ड ट्रेंड था। दिस इज ओनली डिफरेंस। कितना का था, 574 से 660 का, छोटा सा पॉइंट था। फिर यहाँ से दिस वाज द ब्रेकआउट, ये हम इसे कंसीडर करते हैं। इफ आई वुड हैव टेकन अ ट्रेड, आई एक्चुअली मैंने लिया भी था, हमारे बहुत छोटे पॉइंट कैप्चर करे थे, 10 पॉइंट्स का एसएल था और 30 पॉइंट्स का टारगेट था, लॉट साइज वाज बिग। तो वो यहाँ से एक ट्रेंड देखिए, दिस वाज द ट्रेंड लाइन, और ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट लेना शुरू किया था एट 1245 के राउंड। तो यहाँ पर देखिए डॉट 1240 से सटाक से कितना पॉइंट आपको देखिए, 1230, यहाँ से 794, दिस इज 128, यस, 77, ऑलमोस्ट 800 से गया है सीधा 612, 200 पॉइंट्स का डाउन साइड। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले एक्सपायरी का आई डोंट हैव, बट इस एक्सपायरी में ही देख लेते हैं। तो ये कहाँ पे था, 33,700। आई एम कंसिडरिंग 33,700 का पुट, बिकॉज ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो नीचे जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 33,700 का पुट, और आई एल कंसिडरिंग 28। यही 1030 पे जो हमने देखा था, या 1230, यहाँ से देखिए 488 था। नाउ व्हाट वुड बी द एसएल इस पॉइंट पे, कहाँ है, क्योंकि ये एक हैमर बना है कि दिस पॉइंट एज एसएल, अगर यहाँ भी खरीद रहे हैं 499 पे खरीद रहे हैं कि 482, लेट इट हिट। कभी कभी 5 पॉइंट के भी एसएल होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडल। एक सपोर्ट इसका यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे है, आई जस्ट कीप दिस एज अ रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। आप यहीं पे ही बुक कर लीजिए, यू वुड हैव बुक्ड अ डिसेंट अमाउंट, 100 पॉइंट्स इज गुड। ठीक है, सो अभी मैं आपको पीछे भी सारे ट्रेड दिखा दूंगा, कहीं आपको लगे कि सर इट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग। मैं आपको सर निफ्टी में भी आई शो यू, जिस दिन बहुत बड़ा क्रैक हुआ था उस दिन का भी दिखाऊंगा कि पहला 5 मिनट का कैंडल अगर टूटे और उसके ऊपर कंटिन्यू हो, खुलते ही फुट मार दीजिएगा, दिस इज फॉर श्योर। दिस इज 30th, और अभी 28 का हमने डिसाइड किया था। नाउ दिस इज 27, सॉरी 25, 26, ये 27 का था, इट वॉज अ डाउन ट्रेंड, लेकिन इसमें भी क्या था, प्राइस एक्शन वॉज नॉट। एज आई सेड, बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन नहीं था,
बट यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था 1040 पे, तो आई सी एट 1040 यहाँ पे, ये दिस वॉज 1040, और यहाँ से इसने गिरा और सी आ गया नीचे 34,000 से गया सीधा 800%। वाई? बिकॉज यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पे आप देख लेंगे, आई डिस्कस ऑल दो, वो आपको पीछे अभी दोबारा आके मैं इसमें दिखाऊंगा। और ऐसा ही नहीं है कि जनरली आपसे पहले वाला भी जो बैच था वेयर आई टॉट ऑल द थिंग्स, तो मैंने उन चीज़ों को उसमें शायद आई गिव माई व्यूज देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, मैं वो भी दिखा देता हूँ। द पीपल देख, अब क्या होता है कि वहाँ पे व्यू ज़्यादा दे दो तो दे कीप ऑन आस्किंग सर ये भी बता दो वो भी बता दो। आई जस्ट टीच देम एंड टेल देम हाउ टू फाइंड, आई जस्ट गिव देम माई व्यू ऑन स्टॉक, उसमें नहीं है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको इसके बाद इससे आई विल एक्सप्लेन यू विद निफ्टी आल्सो द सेम कॉन्सेप्ट एंड हाउ यू हैव टू मेक एक्सपायरी वाले दिन मेक अ ट्रेड एट 1040 3245, उस टाइम पे अगर आप करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज, आई विल शो यू, यहाँ से एक चीज दिखा देता हूँ, दिस इज मई वाले, तो दिस इज व्हाट बैच चलते ही रहता है, so I just give my view. This is I gave them at 12 914 auto ITC pattern at buy, and इसमें शायद अगर होगा तो they set bank nifty mix में, तो I told them yes it is, and इसमें ये कल का ही LIC LIC whatever it is, तो मतलब ऐसा नहीं है that batch has been over but the constant support has been there from my side so that they can actually understand and become a good trader. ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको निफ्टी में भी दिखाता हूँ एंड आई टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ली चार्ट एंड वन इंडिकेटर दैट इज द स्टॉकेस्टिक। पूरा नहीं बता पाऊंगा बट आई विल एक्सप्लेन, सो आई जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड आई विल बी बैक, सो just over to Shweta. Okay, Shweta, I'll be back Yes. within 5 minutes. Yes, sir. No issues. We'll take a short break, and in that break, I'll explain about the bootcamp. Okay, so guys, like I said in the very beginning, we only have 2 hours, and we cannot complete everything in 2 hours, right? There, stock market itself is a vast. It is like an ocean, and option is just a part of it. So we have planned 12 days long boot camp, which will be starting from 9th of July to 17th of July. And the timing will be same, 7 to 9. We have set the timing considering there might be people, जिनकी job profile होगी या profession होगा, जिनका timing clash कर रहा होगा. So we have set the timing accordingly. And we have taken the review from our previous batches about the timings. Like sir said, you will be enrolled in our premium WhatsApp group. Not just that, we will give you lifetime, hand holding, and you will be part of our community lifelong. Sir की mentorship आपको lifelong provide करी जाएगी. It's not like आज class over हो गया तो it's done from our end. We will be there throughout your trading journey. And guys, if you miss out any class due to any reason, we will provide you recordings. And you have to enroll in this class. I will explain everything about it. And I remember in the very beginning, there were few people who said that they have not even opened their DMAT account yet. So we will provide you assistance. We will help you one-on-one to open your DMAT account, and we will teach you about the platform, whatever you're using, whether it is, zerodha or angel broking. Even now, कुछ लोग होंगे जिन लोगों को कई सारे options के बारे में clearly पता नहीं होगा. And there might be some time जब आपने trailing SL लगाया होगा, वो hit नहीं किया होगा. So it's like, if you need some, expertise or some mentor with you, Manish sir will always be there. Guys, if this is not just about stock market, आप किसी भी जर्नी में अगर आपका कोई मेंटोर है, आपकी जर्नी वो और ज्यादा सिंप्लीफाई और स्पीडी हो जाती है, राइट? एंड मनीष सर has taken screen time and he has given to the market, and you will be giving all the refined knowledge. मनीष सर ने कई सारी सेटअप ऐसे फिल्टर आउट कर चुके हैं जो that does not work in the real market, and you will be provided all the strategies. You don't have to try and test everything. आपको मनीष सर का सेटअप प्रोवाइड किया जाएगा. आई होप whatever you have studied up till now, I hope you feel confident enough to take trade in the real market. And सर का स्टाइल ऐसे ही रहेगा, सिंप्लीफाइड करके गेमिफाइड वे में हम आपको सारी चीजें इजीली प्रोवाइड करेंगे, राइट? वी विल गिव यू द सिलेबस जो हम कवर करेंगे बूट कैंप में.
Sir will explain you about the syllabus, and I will also be explaining everything. I hope most of you might be interested for enrolling the course, or maybe learning about options from Sir. Right now, I'm launching a poll, which is a contact information. You have to fill your name and phone number. All of you who are interested for enrolling or learning from Manish sir, we will be reaching out to you and we'll make sure आपको कोई भी doubt रहेगा या boot camp से related या concept से related, we'll make sure we'll clear that doubt. And sir will explain क्या हम पढ़ेंगे. Svikar sir is saying please explain about how to use long position and short position, and also about the chart patterns. So, like I said, everything cannot be covered in just we are time constrained, but sir will explain once again quickly. And if you are asking about long and short position, so bootcamp yeah. there is one EMA theory that teaches them. So अभी short में last में Q&A होगा, तो I'll explain. छोटा सा part है EMA का, but थोड़ा बड़ा होता है, but I'll tell you EMA theory is very important. वही junior वाला साहब भी वही use करते हैं. All right. So you can you explain about the syllabus? That way we can get a clearer view. Yeah, तो जिसने पूछा था कि क्या चीज़ का है पार्ट का, तो I'll explain कि वो सारे चीज़ें I'm covering up. So the course has been defined, मतलब I designed it methodologically where you can actually understand. So there would be two classes of technical analysis which is going to be very important. अभी काफी लोग के सर के ऊपर से निकल गया होगा support and resistance. So we'll be discussing about the importance of 5-minute chart, hourly chart for intraday and whatever the breakout is. So assignment के बाद you will be able to understand the same. इसमें ही आपके stochastic coverage I use that I'll be explaining. The basic of option right from the start जो बताया हुआ है why जो चीजें चलती हैं. This is very important option chain analysis. Option chain के basis में it was very clear last month कि अडानी Enterprises 2000 के नीचे नहीं जाएगा. The same happened with the Reliance कि 2500 के नीचे close नहीं होगा. The same happened. Last में short covering दिया. Option chain के analysis में second part में we have to find out कि where to buy option एकदम lowest level पे और कितना कहाँ तक जा सकता है. 2600 पे there was strong fall rating, इसलिए 2600 के नीचे ही almost close हुआ. Then option Greeks, somebody who would be trading with good technicals, they don't know how to put stop losses in option. तो जो उसमें decay होता है, I said कि nearest OTM जो ITM में convert होता है, it moves with an option this momentum होता है 0.45. With 1 rupee it moves 0.45. और फिर जब in the money हो जाता है तो 0.6 हो जाता है. On the basis of that we put a stop loss. इसकी calculation होती है that I'll teach. फिर उसमें होता है थीटा एंड वेगा. वेगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थीटा इज लाइक डिके. आप लोगों ने देखा होगा, आपने यू हैव बॉट ऑप्शन, अल्टीमेटली अगले दिन खुला ही वो 50% डाउन, बट पॉइंट ये था कि वो वहीं पे ही था. तो दैट इज व्हाट थीटा डिके इज. दैट दिस टेल अस कि कहाँ पे किस पॉइंट पे लेना है. जो आपको बताया कि 200 पॉइंट्स अप, 100 पॉइंट्स अप, दैट आई कंसिडर्ड इट कंसिडरिंग इन माय माइंड द थीटा वैल्यू जो डिके उसमें आती है. ठीक है. देन देयर इज सेलिंग का एस्पेक्ट है ट्रायंगल, स्ट्रेडल, आयरन कॉन्डोर, कवर्ड कॉल. कुछ लोग जो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं विद फिक्स स्टॉप, विद फिक्स लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट, देयर इज आल्सो देयर आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई, वो सारे. देन उसके बाद कैसे एंटर करना है, एग्जिट करना है, समबडी आस्क्ड कौन सा सिलेक्शन कैसे करना है, दैट आई विल एक्सप्लेनिंग. फिर ऑप्शन स्कैल्पिंग यूजिंग हार्मोनिक्स, दैट आई विल टेल यू कि कहाँ पे लेना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो इंडिया विक्स का, और सर्टेन कुछ अलग कॉन्सेप्ट. ईएमए थ्योरी होती है दैट आई एक्सप्लेन इन मिड वर्ड दिस. जिन्हें लॉन्ग जाना होता है किसी में, तो उस बेसिस. ओके. सो दिस इज द कोर्स इज ऑल अबाउट. आप कंटिन्यू करो श्वेता. Yes sir. Like sir said, technical analysis आपको provide करेंगे हम, and we will also be providing you with the live sessions. क्या होता है, if you go in the market or if you do YouTubing, there are people who are making you understand about stock market, but the lag where people lag is that they don't show you the live market. They themselves don't do the trading. उनको सब कुछ मालूम रहता है, but till the time you're not in that field, and if you're not full-time trader, then you have less credibility, right? And Manish sir has been trading since last more than 10 years, and he has the expertise also in this field. So you can trust that you have a mentor back at the back whom you can trust and you can rely on fully. I'll explain you about the prices. So we can move on to the next line. Next
ऑप्शन भी यही है, तो मैं जो पार्ट जो बचा था मैं वो कवर कर देता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड क्या है? So I'll explain about the price then. Yes, yes, yes. Right. Like I said, live classes will be provided and you will be added to the premium WhatsApp group. And guys, the original price is 5,000. But if you enroll now, if you register now till the end of the class, you will receive the discounted price, which is 40% off at 2,999, right? And guys, I've seen people joining the course at the original price, and I don't want you all to miss out with the added benefits which we are giving you. First is ebooks worth 1,000 rupees. This will be delivered to you, and there is also access to recordings of technical analysis, obviously free of cost, but only if you enroll today. And all those 15 enrollment which we receive will be receiving today will receive the added benefits. अगर आप 15 top 15 में आते हैं, then you will receive the benefits. And the payment modes, you can pay through UPI, debit or credit card. And yes, sir, I'll share in the chat box the enrollment link. Once I start receiving the enrollment, I'll announce in the chat in the class itself, and then we can proceed further. So. Yes. Somebody asked about option selling also. तो option selling कभी I'll explain to the support races भी देखते हैं हम जैसे बता दें. तो एक part होता है उसमें सारा different strategies are there. तो I'll explain that. वो अभी तो मैं नहीं बता सकता, या फिर आप देख के उसको reverse trade में मार दो. ऊपर जाएगा तो put sell कर देना, नीचे जाएगा तो call sell कर देना. ठीक है. तो बट एक चीज क्या है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हाँ 2 लाइव क्लासेस है आप ट्रेड करेंगे साथ में, सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. स्टॉक सिलेक्शन के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट इज द साइकोलॉजी. व्हाट यू डू इज कि 10 पॉइंट ऊपर गया आप बुक कर लेते हैं, 50 पॉइंट नीचे है आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, आप उसको जीरो होने तक एवरेज करते हैं. यू कीप ऑन एवरेजिंग टिल इट बिकम जीरो. This is what the psychology is all about. So you have to know about the money management, the risk management, and when to book losses and when to book profit. When to book loss is important. At that same time, when not to book profit, you have to sit on your profits. So देखिए घटता बढ़ता हुआ टारगेट तक वेट कीजिए, either stop loss or target. This is what the psychology is all about. ठीक है. और एक बार 2 लाइव क्लासेस इसलिए रखें कि ताकि आप लोग जो साइकोलॉजी से रखें, यू कैन एक्चुअली डेवलप योर साइकोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू दिस. Svikar sir is asking about the timing of the course. So timing will be same. It will be 7 to 9. And if by any reason, if you're not able to attend the class, you will be provided with the recordings. And so if you want to enjoy the live session, and if due to any reason, agar aap ye wala bootcamp attend nahi kar pate hain, we will roll over to you to the next bootcamp that will be free of cost with no extra charges. And मितेश सर इज आस्किंग फुल हिंदी में है. हाँ यार दोनों लैंग्वेज में होगा, उसकी आप फिक्र क्यों कर रहे हो. ठीक है. Yes. It is not language का barrier नहीं. People who are, I'll explain the concept in both the languages so that if there is any barrier with respect to the language, it is actually going to be solved. दूसरा जो एक चीज़ है कि even if you are the part, अगर ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म और हमारा काम खत्म, ठीक है ना, आपने प्रीमियम बुक्स में आई ऑलवेज लाइक गिव माय रिकमेंडेशन इन द मॉर्निंग 9-9:05 के बीच में. आई टेल देम कि वेयर टू बाय, वेयर टू सेल. आई डोंट गिव द लेवल्स. Okay, I tell them, I already taught them how to find out the level, how to make the trend line, which hourly chart of which indicator has to be followed, and they make their decision on the basis of the same. अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा तो फिर वो मेहनत करना ही छोड़ दें, है ना. कि एक होता है ना कि टीच अ पर्सन how to catch a fish rather than feeding him the fish, it will make him more competent. That is what I do. तो उस चीज में है. तो जब तक आप लोग एनरोल करते हैं तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन द अदर पार्ट. हाँ, I was telling you with respect to the hourly chart. See, hourly chart की importance is very important. मतलब hourly chart is very important if you are going to make a trade. बैंक निफ्टी वाले या निफ्टी वाले whatever it is, हमेशा hourly chart में you should keep an eye. अभी से ये देखो, क्योंकि क्या है कि डेली के we already have made our support and resistance, but hourly में भी दे रहा छोटा छोटा small support and resistance. ठीक है. ये रेजिस्टेंस था, इट हैज बीन ब्रोकन. फिर एक छोटा सा यहाँ पे था 700 पर. आज का आवरली चार्ट में व्हाट वाज दिस वाज द इट वाज ओपन हियर, वेंट बैक हियर,
दिस वाज द आवरली का ब्रेकआउट व्हेन 657, इसके बाद इट वेंट अप। यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ से एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का मूव आना ही चाहिए, 100 या 200 पॉइंट्स इसके ऊपर आया। ये चीज आपको ध्यान रखनी, आवरली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका स्टोकेस्टिक है, अभी तो उतना टाइम रहा नहीं है, बट इट इज नॉट अवॉइड द यूट्यूब में आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज देते हैं, इट इज नॉट द ट्रेडिशनल वैल्यूज, इट इज अबाउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहाँ से आपको पता चल रहा है कि इट इज गोइंग टू मूव अप और डाउन, दैट इज बीइंग कंफर्म्ड बाय स्टोकेस्टिक ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 टू 30, 10 टू 1 आवर में सारा कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर 1 आवर में दिख रहा है तो ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आवरली चार्ट के हिसाब से इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि कल थोड़ा गैप डाउन होगा, ऐसा इसमें दिख रहा है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग कि कल थोड़ा सा गैप डाउन हमें मिल सकता है। somebody asked me in previous class day before yesterday कि मार्केट की ओपनिंग क्या लग रही है, तो गैन थ्योरी के लेवल के हिसाब से तो ये वाला नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी बुलिश। देयर इज अ गैप इन निफ्टी 16200 तक, 170 तक इट हैज टू मूव आई गेस, प्रोवाइडेड सब कुछ रिमेन द सेम। तो गैप फिलिंग एक्सरसाइज होगी, उसके बाद फिर एक थर्ड बात हमें 8 से दिखेगा, 14 को देयर इज अ वेरी इंटेंस सेलिंग माइट हैपन, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो स्टॉकेस्टिक के हिसाब से कल एक छोटा सा गैप डाउन दिख रहा है, छोटा सा, नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। कहाँ तक Right, ऊपर sir. जाएगा वो आपको दिख जाएगा। ये रेजिस्टेंस आप आरवी चार्ट पर देख लेंगे, निफ्टी में अभी एक रेजिस्टेंस अवरली चार्ट में, दिस इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस 780 से 787, 790, इसके ऊपर इट विल मूव टू 840 रेजिस्टेंस है, देन 909 और फिर ऊपर आपको पता ही, फिर ये गैप है बहुत बड़ा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा 920 के ऊपर, अच्छे हो जाए। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि ये मल्टीपल चार्ट्स में आपको दिखाया था 5 मिनट में, इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू निफ्टी आल्सो। यहाँ पे तो द सेम इज आल्सो एप्लीकेबल इन निफ्टी, तो निफ्टी में भी आपको दिख जाएगा। Yes, sir. So till then, I have a question from Balvinder sir. हाँ Sir, you can pay through UPI. मैंने chat box में UPI ID mention करी है. आप UPI ID के through pay कर सकते हैं. Otherwise, there is a link which is called enrollment link. आप उसके through अगर if you want to use your card, then आप उसके through भी use कर सकते हैं. All right. Once you pay, I'll check from my finance team and I'll get back to you and I'll give you confirmation that आपका payment secure हुआ है. And all the other people who want to join, you can pay through the link or the UPI ID. If you're facing any issue, you can pin me in the chat box and I'll get back to you. निफ्टी में ये वाला एक आवरली चार्ट का था, 5 मिनट के चार्ट में आप इसको देख लीजिए। एज ए सेड 10:30 में वी गॉट द कंफर्मेशन और एग्जैक्टली 10:15 यहाँ 10:30 से इसने दिखाया कि यहाँ से अप निकलेगा। ठीक है, तो 573 बीच में यहाँ तक भी गया, इट वेंट फ्रॉम इन 10:30 यहाँ तक था 577 से 630 मूव किया, फिर नीचे आया, डाउनवर्ड कंटिन्यू, इट वेंट अप। आप इसे देख सकते हैं, तो सेम हैज बीन फॉलोड। थोड़ा सा एक यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी थी, बट वो फेल्ड हो गया। कितने बजे? 1:55। तो दिस इज 155, ये देखिए 155 से 694 से ये सीधा गया 652, बट इट रिमेन डाउन ट्रेंड, इट वेंट अप। तो जो कंफर्मेशन के लिए है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी में ऐसा ये चीज नहीं फॉलो होती है। अब एक तो So your screen is not visible. सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। No, it's fine. Till then, uh, Srikar sir, I'll check from my team and Balvinder sir, I'll confirm you as well after we verify. सॉरी, एक्चुअली वो बटन Yes, दब गया। sir. Okay, so this is what this screen looks like now. It is fine now. Yes, sir. It is fine. तो मैंने आपको टाइमिंग बताया था, यहाँ से 10:30 से वी गॉट कंफर्मेशन, दिस इज फॉर टुडे। यहाँ पे 10:30 पे वी गॉट कंफर्मेशन एंड 10:30 पे इसने यहाँ पे 15 पे लो मारा, 10:30 पे इट वाज हियर दिस पॉइंट। तो यहाँ से आप यहाँ पर तो आप देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो हिट ही हो जाता, थोड़ा सा नीचे लगा सकते थे या फिर नीचे का इस पॉइंट पे लगा लीजिए, वो ऑप्शन पे हम देख लेंगे उसके पीछे। फिर ये सीधा अप था और कहाँ से मूव किया है इसने 15,570
So I'll be taking Nifty might take 100 points to gap. So I'll be considering Nifty 15,600 plus. So 7 July वाला जो breakdown है proper. This is 10:30 में almost यहाँ पर था. This was the point 162. अब नीचे जा सकता है. I'll be keeping this as ऐसा. थोड़ा सा बड़ा रखना है क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा फॉल था. What is the 165 142 हार्डली कितना पॉइंट आ रहा है ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का थोड़ा सा डीप है और ज़्यादा सिक्योर रहना तो यहाँ पे तो कम से कम 147 तो रखना ही है ठीक है फॉर सेफ्टी पर्पज यहाँ लगाया या तो आप यहाँ कवर कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है अगर होल्ड करते कीप योर एसेट एंड होल्ड कहाँ से कहाँ गया ठीक है और हाँ इसमें रेजिस्टेंस क्या है दिस इज वन रेजिस्टेंस जिससे थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये एक रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ तक नहीं आया बट अगर दूसरा भी आपको मिल जाएगा तो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेड आगे कैन क्लियरली सी 163 से 240 इन द डिसेंट पॉइंट और कैरी कर सकते हैं और मिल जाएगा बट यहाँ सेकंड टारगेट में आके एटलीस्ट एसएल यहाँ पे लगा लें 170 में या फिर कहीं भी लगा लो या बाय प्राइस पे लगाओ कि रुकना नहीं चाहिए यू शुड नॉट लूज दैट वाज द कंसर्न तो अब बताइए कि क्या क्या आपको क्वेश्चन वगैरह है देखो यार राजवीर जी सिलेक्शन का स्टॉक तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज आई यूज प्री वॉल्यूम so I use the software also apart from that I make very much calculations I read all the brokerage reports I read all the news associated with the same so, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है 1 घंटे में उसे बता पाना उसके लिए तो करीब मतलब खुद 7-8 दिन लग जाएंगे आपको बताने इट इज वेरी टीडियस so apart from it if any questions or any doubts you have so just let me know और आप इन्हें unmute कर देना if you have any question just raise your hand okay so All right. So with this, we have received 2 payments, and we are only left with few slots as of now. I can see other people also trying. If you are facing any issue with the payment, you can type in the chat box, or if you have any issue regarding bootcamp, अगर आपको bootcamp की timing या dates या किसी भी चीज से recording, if you have any query, type it out. Other than that, अगर आपको किसी भी concept में query है जो आपने आज पढ़ा, you can raise your hand and we'll give you access to unmute yourself so that you can have direct interaction with sir. Till then, speed up, hurry up, grab your seats, and have all this special benefits. And Balvinder sir and Srikar sir, you will receive all the benefits. Can you make it free? Roshan sir, what happens is, आप free में YouTube भी कर सकते हैं, but till the time you have, if you have paid something, if you are putting your energy, effort and money into something, skill development करने के लिए, then you have this responsibility at your head कि okay, the other person is also giving you time, this must be a responsibility कि आप भी अपना decent genuine time दें. देखो एक चीज आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल इन एनी यूट्यूब और एनी चैनल दोज आर माय स्ट्रेटजी व्हिच आई फॉलो एंड वन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू फॉर फ्री यू कैन यूटिलाइज इट उसके अलावा व्हाटएवर इट इज तो वो सबको नहीं समबडी आस्क्ड मी फॉर ऑप्शन देखो यार आई कैन टेल यू इन ब्रीफ बट व्हाट इज द पॉइंट है ना देयर इज अ प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप ये इतनी स्ट्रेटजी बताने के लिए आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ताकि सबको समझ में आए ऑप्शन चेन इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क इसके लिए ऑलरेडी 2 क्लासेस मैंने रखी हुई है इसमें तो वेट अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा आपके ऊपर से ही चला जाएगा so there is no point in giving a brief description of option chain I want to explain you in detail that what is the depth there how you can actually find out the right strike price and the support also so okay Roshan sir is saying he means to pay after the bootcamp. So what we can do is that we have an option for you. If you are unable, if you are unable to pay now, अगर आप full amount अभी pay नहीं कर पा रहे हैं for XYZ any reason, we will reserve your slot. We will save your slot, but for that you have to pay the token amount. You have also payment mode which is EMI. आप उसको opt कर सकते हैं. EMI के थ्रू आप जितनी भी 2999 फीस है आप उसको पे कर सकते हैं इन पार्ट्स और इन EMIs. And trust me guys, what you are paying and what you are getting instead is valuable. And trust me, nobody gives you lifelong hand holding and with this much amount. अगर आप ट्रेड करेंगे and in options we all know earning 3000 is nothing, right? So you have EMI options also. For that, you have to pin your WhatsApp or phone number. I'll get back to you. Or what else you can do is that
you can pay 1500 now, or if that does not work for you as well, we have another options. But for that, you have to, pin your WhatsApp or phone number. Our team will reach out to you. Our team will contact you. बट जैसा कि मैंने बोला, ये ऑफर सिर्फ 15 स्लॉट्स को ही अवेलेबल रहेगा. यू हैव टू रिजर्व योर स्लॉट. आपको अपनी सीट सेव करनी पड़ेगी, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये स्लॉट्स बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं, एंड देन आई डोंट वांट यू ऑल टू मिस आउट ऑन द एडेड बेनिफिट्स. आप अपना, रोशन सर, आप अपना मैं आपको नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए. मैं कुछ बता रहा था. यस सर. somebody asked कि कैसी जर्नी थी. जर्नी ऐसी थी कि मैंने स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जीरो कर दिए थे. आई मेड देम लिटरली जीरो. देन स्टार्टेड लर्निंग. आई गेट टू माई सेंसेस. सो आई स्टार्टेड लर्निंग. और फिर मैंने सीएफए का पेपर भी दिया था. तो आई स्टार्टेड माई जॉब देयर एंड आई लर्नड अ लॉट. मैंने ये सीखा, रिटेलर्स की कोई औकात नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज अ गेम बिटवीन एफआईआईज एंड डीआईआईज. जो जहाँ जिस डायरेक्शन में बहेगी गंगा, आपको उनके साथ अपनी नाव चलानी है. दैट इज व्हाट आई हैव लर्न सो फार. ठीक है, कैसे आपको कहाँ पे क्या देखना है, दैट इज द पॉइंट इज. और somebody asked कि ऑप्शन चेन सी यार. ऑप्शन चेन अगर आपको बेसिक देखना है ना, यू कैन सी एनी यूट्यूब वीडियो. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, इट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल एनीवेयर, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. ओके, तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो बहुत एडवांस से बताता हूँ कि कैसे आप पहली सपोर्ट निकाल सकते हैं, कैसे पहली रजिस्ट्रेशन से निकल जाता है, और कहाँ पे ऑप्शन को बाय करना है. सो दैट इज इट ऑडिबल नाउ? या सो वो चीज थोड़ा एडवांस यस है. सर. दैट देयर आर 2 to 3 क्लासेस फॉर ऑप्शन चेन इटसेल्फ. तो ऑप्शन चेन से हमें शॉर्ट कवरिंग का वी नीड टू नो. वी केम टू नो अबाउट शॉर्ट कवरिंग. वी आल्सो केम टू नो अबाउट वेयर इज द सपोर्ट. ठीक है, वो सब आपको पता चल जाएगा उसी बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस आपको पता चल जाता है. तो वो एक अच्छी चीज है. normally what it comes. अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है, just raise your hand. I just want to talk to people with different like experience of theirs in share market. Just raise your hand if you have any query or doubt. But ऐसी query मत पूछिएगा कि which is hard to explain in just single 5 minutes. ठीक है ना, तो कुछ भी पूछ लीजिए, whatever it is. Anyone would want to volunteer? Komal sir, Pramod Either sir. either they are a pro trader or what, I don't know. So I guess शायद ज्यादा किसी को कोई डाउट है नहीं. ऐसा तभी होता है या ज्यादातर सब लोग प्रॉफिट में हो. Show the support which you have done since 3 years just to get double. Absolutely. I don't get the question. See, long and short positions का I use EMA theory. अब उसको भी देखिए, आप अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में नहीं सीख सकते हैं. ठीक है ना. तो इट इज ओनली अबाउट ईएमए के जब पूरा बंडल थ्योरी होती है. सो व्हेन द बंडल एक्चुअली क्रॉस ओवर, उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या इन्फ्लेक्शन होता है, उस चीज को हम देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टेक अ ट्रेड. तो छोटा सा 2-3 उसके कंस्ट्रेंट होता है. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज, अरे कोई भी चीज है, जैसे ओएनजीसी का ले लो. ठीक है ना. बट वंस यू हैव टू देखो, इंट्राडे ट्रेड के लिए 5 मिनट्स और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएंगे. फॉर अ डेली चार्ट यू विल बी गेटिंग बिग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. शॉर्ट के लिए आरली, देन 15 मिनट, देन 5 मिनट. तो दिस इज ओएनजीसी. मैं एक बार और आपको बता देता हूँ. कोमल साहू जी, आपका क्वेश्चन क्या है? तो उस बेसिस में आई टेल यू. आप लोग के क्वेश्चन होते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, जो मैं 10 साल लग गए सीखते सीखते, वो आपको 5 मिनट में सीखना होता है. एक्सप्लेन अबाउट ऑप्शन चेन, जिसके लिए 2 क्लासेस में लेता हूँ, पूरे 5 घंटे का उसका लेता हूँ, वो आपको 5 मिनट में चाहिए. दिस इज नॉट पॉसिबल ना एक्चुअली. तो ऐसा क्वेश्चन जो मैं ढंग से आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं उसे कैसे बता दूँ आपको. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का समबडी आज देखो, इसको थोड़ा पीछे कर लो. ठीक है ना. तो हिस्टोरिकली ये 2020 में जब क्रूड प्राइस गिरा था तो 50 तक आ गया था. सो इससे पहले के आप प्राइसेस को देख लीजिए, यहाँ पे 50 से ही देखें. सो व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग. ठीक है ना. तो आई एम एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन. तो एक सपोर्ट, ये है सपोर्ट, एक ये छोटी सी लाइन है, यहाँ से वो नीचे नहीं गया. फिर एक दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस इज द रेजिस्टेंस 80 का. फिर और ऊपर आएंगे, यहाँ से ऊपर निकला तो एक ये रेजिस्टेंस था, ये गैप था. फिर एक ये रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे. ठीक है. अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. लेट मी पुश. ओके, ये डेली चार्ट है. अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ये एक रेजिस्टेंस था,
तो पुराने चार्ट्स में देख रहा हूँ, ये 132 एक रेजिस्टेंस था, 150 एक रेजिस्टेंस था, दिस इज 2000 पुराने वाले। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, ये क्या ये एक रेजिस्टेंस नहीं है, दिस ये लाइन और ये लाइन बार बार इसके ऊपर कूद नहीं पा रहा था, तो यहाँ तक गया पहले ही जंप में 162 तक, तो यहाँ से जंप मार के ये यहाँ तक गया 170, यहाँ से जंप मार के ये यहाँ तक गया 177, फाइनली यहाँ तक। ये मैंने खींचे हैं आपके 2014 से। अब आप देखिए इसे यहाँ पे 2022 में, दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सट्रापोलेटेड। आप खुद देखो क्या ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इफ इट इज वैलिड और नॉट। और कुछ चीजें देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे यू विल लर्न, मैं देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। देखो दिस वाज अ रेजिस्टेंस, ये यहाँ सपोर्ट हो गया था, ये यहाँ सपोर्ट की तरह था, ये टूटा, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट पे गया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट, और जब यहाँ पे इसने ये ब्रीच किया तो सीधा कहाँ पे एकदम क्लियरली 190 का हाई भी मार दिया, वहां से कहाँ तक आया एकदम क्लियर। अब समझ में आ गया। somebody asked this question with respect to support and resistance। अगर अभी कुछ डाउट है तो और बताइए इसमें। एनी डाउट द पर्सन हु asked this question? तो यार प्रीवियस बैचेस के सारे आप लोग को दिखा तो दिए मैंने यहाँ पे, वो तो अभी तक चल ही रहे हैं। एक बैच जो पिछला वाला था उसमें तो अभी तक चल ही रहा है, तो मॉर्निंग में दैट बैच हैज ऑलरेडी बीन ओवर, बट आई एम कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग द इनपुट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि कहाँ पे किस जगह मूवमेंट आने वाला है। तो यार देखो, आप ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस करना, डेली चार्ट बनाना, उसमें देखना कहाँ कहाँ पे वो उस पॉइंट से मारियो की तरह जंप मार के नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, 4 5 6 7 कैंडल देखना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। एक दिन में आप नहीं सीख सकते, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द थिंग, थोड़ा 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 करके यू लर्न। ठीक है ना, somebody showed कि यार दिखा ही देते हैं आपको। और तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज वाइल शोइंग यू कुछ कुछ बताते हुए आई एम नॉट एबल टू सी द चैट्स आल्सो, तो जस्ट लेट मी नो कि आपको कुछ ना कुछ डाउट हो गया तो। So as of now, we have ये वही कितने सपोर्ट में, देखो ये सपोर्ट, देखो ये बैच इट हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, सो आई आस्क्ड देम टू ड्रॉ आर्ली चार्ट मॉर्निंग में ही, सो आई गेव पेट्रोनेट, सो ही ड्रू द चार्ट, इट वाज वेरी गुड, और सेम उसी को फॉलो किया है। 200 ये सपोर्ट था एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, और ये 221.65 का रेजिस्टेंस था, वहाँ तक गया भी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और आप देखेंगे टाइम मार्केट खुलने से पहले ही आई गिव देम माय ऑल माय कम्युनिकेशन, और जो क्वेश्चन जो दे पूछते हैं तो आई लेट देम नो। तो जो ऑप्शन चेन के बेसिस में दिस गर्ल एक्चुअली एबल टू फाइंड आउट कि कैसे आर आई एल में कहाँ है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड देम एंड शी वाज एबल टू गेट द प्रॉफिट। तो ओ आई समबडी सेट की वो चीज़ के लिए, सो एंड दिस इज व्हाट आई शर्ट टाटा स्टील, ये पुराने पुराने देखिए सारे मैं देता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड खत्म, क्लास खत्म हो गई। मतलब ये पढ़ाना इज माई पैशन, और इससे खुद के भी कॉन्सेप्ट अच्छे ही रहते हैं, so it keeps you in a mode of you constant learning, so that is what I do। so जो जो चीज़ें क्लास में होने वाली होती हैं that I explain them। ठीक है ना, तो दिस वाज, एक बार मैंने एक छोटा सा ट्रेड लेके दिखाया था कि कैसे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई टुक अ ट्रेड, मैंने 30 लॉट्स लिए थे, 94 पॉइंट्स का ऐसा लगाया था, 10 पॉइंट्स का टारगेट, एंड इट हिट। ठीक है ना, तो आई टोल्ड देम कि यहाँ पे मैंने लगाया भी था। सो आई टोल्ड देम द रीजन कि कैसे स्टॉकेस्टिक, कैसे आपका विक्स ऊपर गया था, यहाँ पे ब्रेकआउट विक्स ने लिया था, और कैसे आपका स्टॉकेस्टिक ने इंडिकेटर दे दिया था। सो आई टोल्ड देम एंड आई टोल्ड देम कि एस एल 4 पॉइंट्स का था, टारगेट 10 पॉइंट्स का था। आई शोड देम ऑल्सो, ये उस दिन पढ़ाना भी था। यार हार्मोनिक्स ये होता है कि मूवमेंट ऑफ आपका क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन का, कि देर इज अ पैटर्न, है ना, उस पैटर्न का हाई और लो कैसे है, और कैसे उस पॉइंट से आप कहाँ पे बाय करके कैसे छोटे छोटे भी मार सकते हैं। इवन 10 पॉइंट्स गिव यू ट्रेमेंडस अमाउंट। तो भले ही 125 तक गया था उस दिन, बट आई हैव बुक्ड इट 10 पॉइंट्स, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड वाज वेरी गुड। आई पुट एन एसएल ऑफ 4 पॉइंट्स, आई वाज गेटिंग 2.5 मोर देन व्हाट आई पुट एज एन एसएल। अगर स्टॉप लॉस 4 पॉइंट पे लगता भी तो कितना जाता, 6,000 रुपये जाते, बट आई वाज गेटिंग 15,000। ये मतलब एक, मैं लेटर ज्यादा ही लौट हूँ, बट जस्ट टू शो देम आई टुक अ ट्रेड लाइक दिस। ठीक है, और दिस इज, ये जो जो सपोर्ट बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं, सारे मैं हमेशा मॉडल में डालते हैं। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज, तो वो तो आपको मिलता ही रहेगा, इट इज नॉट अबाउट द सेम।
ठीक है। सो अब कोर्स आप जो करेंगे तो डेफिनेटली दे विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। इट इज नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे कोर्स सेल करने आया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी आपकी कोर्स की फी है उससे 3 या 4 टाइम्स तो मैं ब्रोकरेज ही भरता हूँ डेली बेसिस में। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा। और वो भी आपको उसमें, अगर आप मेरी क्वांटिटी देखेंगे तो आप उसमें भी आई गेस आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ पर होगा। होगा भी शायद, कभी कभी रख लेता हूँ दूसरे सिस्टम में की इन माई ट्रेड्स जनरली। I have an announcement to make. We are only left with 10 slots as of now, and I'll confirm all the payments which we have received. आप सभी को added benefits मिलेंगे, and other people speed up. If you want to avail with the benefits, you can enroll now. You still have time. आई डोंट नो फोटोज ये अभी डाउनलोडेड है नहीं है। आप इसमें क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैं बड़े बड़े क्वांटिटीज के साथ करता हूँ। सब बड़ी जनरली दिखाता नहीं हूँ कि मेरा क्या है, तो आप क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज माइन ओनली। ठीक है ना, तो ये सारे मैं रख ही लेता हूँ। समबडी आस्क्ड मी टू शो व्हाट इज माय प्रॉफिट एंड लॉस P&L। दिखाना नहीं चाहता हूँ, वरना आप लोग क्या होता है ना, ऑल इन कर देते हैं कि चलो घुसा दो। बट दिस इज व्हाट आई डू। लॉसेस भी होता है, ऐसा नहीं है। इसमें काफी तरह को इट इज नॉट डाउनलोडिंग, आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। बट जितने डाउनलोड होते जा रहे हैं आई शो, क्योंकि अब लोग कम रह गए हैं, तो स्टार्टिंग में आके दिखा के मैं अपना बोस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज आई डोंट डू। इसमें जो डाउनलोड होंगे वही दिखा रहे हैं। कभी लॉस भी हुआ होगा बड़े बड़े। हाँ ये तो अलग है। तो लॉट साइज बहुत होते हैं मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कम भी होते हैं, बट इट डिपेंड्स कैसा ट्रेड है, कैसा एसएल। अगर एसएल हिट होता है, देखो यहाँ एसएल हिट भी हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, समटाइम्स लॉस भी लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ट्रेडर हैं तो हमेशा सही होंगे। यू हैव टू मेक ऑप्टिमम ट्रेड, उसी बेसिस में होता है। यहाँ लॉस भी था, ऐसा नहीं है कि सब प्रॉफिट वाले होते हैं, नेट लॉस भी है। सी मतलब ट्रेड्स होते हैं, देखो लॉस होता है तो आई एक्सेप्ट। उसमें बड़े लॉट्स थे तो मैं लॉस ले लिया था। मुझे लग रहा था कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो इट हिट। शायद यहाँ पे कुछ लॉसेस भी थे। मतलब ऐसा है कि हाँ देखो ये बड़ा लॉस है, दिस इज अ ह्यूज लॉस। अब है तो है, ले लिया, अब क्या कर सकते हैं उसमें। बट ऐसा होता है कि रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाती है, बिकॉज आई नो यहाँ पे भी लॉस है। लेट्स शो यू कि लॉसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली प्रॉफिट इज देयर, बट लॉस भी होता है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो अच्छा हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? देखो P&L आप लोग मतलब यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ मतलब कि ऊपर नीचे चलता ही रहता है। इट इज नॉट लाइक दैट। समबडी आस्क्ड कि क्या है जर्नी, क्या है, तो जर्नी बहुत सिंपल थी। कुछ चीजें होती हैं जो एक्सेप्ट करनी होती हैं। हाँ अब बताइए, किसी का कोई डाउट? जस्ट रेज योर हैंड, थोड़ा सा टाइम कम ही है। उत्पाल मेरा can आई I यूज एंजल। five 500 to enroll. So, well, I think there might be some students जिनके लिए फुल अमाउंट पे करना थोड़ा मुश्किल होगा. सर आप अपना नंबर पिन कर दीजिए चैट बॉक्स में. Our team will contact you and will make sure हम क्या कर सकते हैं आपके लिए. Utpal sir, just pin me your WhatsApp or phone number and our team will contact you. And also other people जिनको अभी join करना है but due to some XYZ any reason if you're not able to pay the full amount now, we have an option which is EMI. You have to pin your WhatsApp number और phone number. हम आपको कांटेक्ट करेंगे. आप टोकन अमाउंट पे करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए. सर अगर हम आपको कांटेक्ट करेंगे एंड डू नॉट वरी, यू विल बी द पार्ट ऑफ एडेड बेनिफिट्स अगर आप फर्स्ट 15 में एनरोल करेंगे. बट गाइज यू इफ यू वांट मी टू सेव योर देखिए सीट्स. मैं आपको सॉरी सॉरी श्वेता, अभी सुन कि एक चीज होती है कि पीपल से वी लर्न दिस कोर्स दैट कोर्स। आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, और कैंडल्स और कुछ ही चीजें हैं जो अपनी, जो मैं आपको बताऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो आपको 100% वर्क करके देगी एंड यू विल गेट माई फुल सपोर्ट टिल आई एम अलाइव इन द ग्रुप इटसेल्फ। बट अगर आप नहीं दे कोर्स नहीं ज्वाइन करें तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी,
ठीक है ना, बिकॉज इट इज लाइक द सेकेंडरी सोर्स जहाँ मैं लोग को सिखाना चाहता हूँ. द लोअर द पीपल आर द बेस्ट दे विल लर्न फ्रॉम मी. तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे तो इट इज गुड फॉर मी. जितना छोटा बैच होगा उतना ही अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, और क्या बड़ा भी बैच होगा तो भी अच्छा ही पढ़ाता हूँ. बट जितने कम लोग प्रो बनेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है. तो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई सेड कि जितनी आपकी फीस है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो उससे ज़्यादा आई यूज टू पे माई ब्रोकरेज ऑन अ डेली. आज का भी दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, बहुत सारे लॉट साइज करे हुए हैं. तो ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो करना ना करना, इफ यू हैव एनी डाउट, खैर आप वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है. बट if you have any doubt with respect to trading or whatever you want, somebody was asking some question, I don't know, मैं कुछ बीच में बताना शुरू कर दिया था. So I'm extremely sorry, somebody said कि कोई question नहीं ले पाएंगे, तो I'll take the question now. Would it be correct to consider India VIX leading? यार देखो, लीड तो कर रहा है बट देर इज अ पीक पॉइंट ऑल्सो. इन डाउ का डॉलर इंडेक्स का, दैट आई टीच यू इन द क्लास, और बॉन्ड यील्ड का एंड इंडिया विक्स. जैसे ही पीक हो जाएंगे ना, उसके बाद जब गिरेंगे तो मार्केट में सिंपल बुलिशनेस आएगी. 17 के नीचे इज वेरी गुड मार्केट, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग होता है. 17 के ऊपर गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन तो चल ही रहा है. फ्रॉम द पास्ट 3.5 मंथ तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं. आप देख लीजिएगा जब विक्स 17 के नीचे था तो क्या 40,000 आपका बैंक निफ्टी मारा हुआ है. ठीक है ना, तो वो चीज दैट आई एक्सप्लेन यू, जो बूट कैंप में आएगा तो आई एक्सप्लेन देम एवरीथिंग वहाँ पे कि कहाँ पे कैसे लॉन्ग पोजीशन बनानी है. somebody asked me how to make a long position, तो इंडिया विक्स को देख के हम लॉन्ग भी बनाते हैं. ओके, और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए. एनी क्वेश्चन इफ यू हैव तो आप बताइए. वी हैव 1-to-1. ठीक है, मैं तब से मैं ही बोला जा रहा हूँ, आई वांट यू टू स्पीक आल्सो. ठीक है, सो इट डजंट मैटर इफ यू जॉइन द कोर्स और नॉट. इट इज नॉट माय कंसर्न. आई जस्ट वांट टू लाइक गिव द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन. ठीक है ना. All right. Anyone would want to volunteer सर से interact करने के लिए? कोई भी? प्रमोद सर, how was the class for you? Maybe कैसा था आपका experience? मैंने अपना कोमल सर. बड़ी आज की आपका क्या रहा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस. आई एक्सप्लेन. मैं लॉस खाया था एक टाइम में बहुत बड़ा, बट आई लर्न. और उसके बाद फिर वो लॉस तो कब के बहुत पहले ही कवर हो चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट. अब मैं खुद की एडवाइजरी रन कर रहा हूँ ऐसे मार्केट में, सो इट इज़ अ डिफिकल्ट टीडियस टास्क. करना पड़ रहा है बट क्या करें. है तो है. नाउ एनी, कोई 1-to-1 कुछ पूछना चाहता है बताएगा तो आई डेफिनेटली आई गिव द आंसर. Okay. Anyone with any doubts? So thank you, Pramod ji. If you enroll, if you have already enrolled, then you will be getting much more concepts, which I have, and I'll giving you better view. Yash sir is saying I can't pay one-time payment. Yes, sir. वही मैं आपको बता रही हूँ. If you are not able to pay the full amount right now, we will contact you, or you can pay in parts, which is EMI, right? तो आप अपना नंबर पिन कर दीजिए, या हम आपको डिस्काउंटेड लिंक प्रोवाइड करेंगे थ्रू विच यू कैन पे 1000 अमाउंट, विच इज द टोकन फी. इफ बाय एनी चांस अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू पे दैट आल्सो, जस्ट गिव मी योर व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट डिटेल सो दैट हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाए. राइट, जस्ट पिन योर व्हाट्सएप और फोन नंबर इन द चैट बॉक्स. All right, sir, we will contact you. यार इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? ये तो आपकी जनरल क्वेरीज हैं, ये तो मैनेजमेंट वाले ही करेंगे. मैं सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको क्वेरी आई कैन सॉल्व दैट. ओके, मिस्टर मनीष कुमार गुप्ता वांट टू आस्क समथिंग. लेट्स जस्ट अनम्यूट हिम. चलो, somebody actually is going to interact. Manish Kumar Gupta, sir. Okay. So can you raise your hand, please? I'll give you the access to unmute yourself. Before that, I think Satish sir is also. Okay. You'll get. So I have given permission to unmute yourself, Satish sir. You can unmute yourself. सर ये अक्सर ये कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर जो ज्यादा कमाता है ऑप्शन बायर के मुकाबले ऑप्शन बायर लूज करता है. सर ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में नहीं आती है. वो इसलिए आता है कि ऑप्शन बायर बाय करता है, 32,000 चल रहा है, 40,000 की कॉल लेके बैठ जाते हैं और सपने देखते हैं रात भर की बस कल मार्केट में 2,000 पॉइंट का मूवमेंट आएगा. ऐसा होता नहीं है. ऑप्शन चेन का उनके बारे में पता नहीं है. एट द सेम टाइम उन्हें स्टॉप लॉस नहीं पता है. उसे वो कब तब तक एवरेज करेंगे जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता है. सिंपल. ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं है. आई बाय लॉट ऑफ ऑप्शन. मैं स्क्रीन शॉट में दिखा दूंगा आपको, मैं बाय करके आपको पैसे कमा के दिखा सकता हूँ. आई नो. सेलिंग में अगर पैसा बनता है तो बाइंग में भी बनता है. देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग.
सीधी सी बात। और सेलर ने भी ना बहुत पैसा कमाया है। आई नो वन फंड हाउस मैनेजर इज माई फ्रेंड। तो जब मार्केट एक दिन 300-400-600 पॉइंट नीचे गिरा था और अगले दिन 800 पॉइंट गया था, दे लॉस 1.2 करोड़ रुपीज। नाम नहीं बताऊंगा, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उस चीज को क्या रिवील करना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलर्स भी लॉस करते हैं भैया, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ वो कमाते हैं। जो टाइम डिके होता है तो उससे उन्हें मिलता है। एक कहावत है कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना वो खाते चींटी की तरह है, लेकिन वो पॉटी एकदम हाथी की तरह करते हैं, एक ही दिन उड़ जाते हैं। कहावत बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका लॉस अनलिमिटेड। दैट्स व्हाई, अगर वो कवर्ड कॉल नहीं है। हाँ, अगर कवर्ड आपने आयरन काउंटर वगैरह बनाया तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, और किसी और का क्लियर हो गया ये चीज़ आपको? जी जी। मैं आपको निफ्टी का डेली चार्ट भी दिखाता हूँ, जहाँ पे एक बहुत बड़ा लोगों ने लॉस, एक नहीं कितने ही मेरे जानने वाले थे जिन्होंने लॉस खाया था। और वो आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कहाँ पे था। कौन सा दिन था, ये वाला दिन था 24/5 को ये गिरा था, यहाँ से ऊपर आके यहीं पे। और ये 2 दिन, यह वाले 2 दिन में ऑप्शन चेक ये वालों को ट्रैप किया था बहुत गंदा। जैसे यहाँ बुक नहीं गया था वो नेकेट में गए बहुत गंदे तरीके। Okay, so Manish is there. Manish Kumar Gupta. What is the question? You are already unmuted. Yeah, am I audible? Hello. Yeah, yes, you are audible. Actually, sir, the thing that happened recently is like I was a newbie to the stock market and I had invested via Angel One. So recently, I got a call from someone like that person would help me in earning a certain amount of money, and that person would take a certain percentage. So Yeah, then that I is the realized, scam which is going on. I know. yeah, so I relied to that person, and what happened is like for the first few days, it gave me like almost a double return like in lakhs, and after few days what happened is I got a major loss, like I lost almost all my principal You would have along wiped with the out your profit. capital. See, this is the scam which is going on. There are two cartels. One is from Indore, one is from Gujarat, and the third is from Jharkhand. They call you that they are calling from this advisory. Will give you 90 to 100% return. This is what they give you. They ask you to buy this और hold करा के रखते हैं. They'll ask you for their commission within profits of 5 minutes. और वरना लॉस होगा तो फोन स्विच ऑफ हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. और ये टेलीग्राम वगैरह में भी इस तरह होता है. इसके डर के मारे से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं चलाया यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो इट्स बेटर टू लर्न देन अर्न rather than depending upon someone, है ना? Yes. तो ऐसा So होता sir, है I यार. was asking that I have lost means almost all my amount except the emergency fund. So Okay. how should I proceed then? Like what would you do like if you are in a situation where you have lost your I all was the in fund? this situation. I lost a huge amount. I started learning, and then I started earning. And once you learn something, when you start earning ना, whatever you have lost, you make 10 times of that, more than 100. अब मेरा तो कितना times I don't know, but I made huge amount of that because मुझे पता चल गया. साइकोलॉजी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्टॉप लॉसेस की, टारगेट की, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए. एज सिंपल एज दैट. पहले यू शुड लर्न, है ना, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन समवन. यू शुड. अब देखो, या तो ऑथेंटिक कोई एडवाइजरी सर्विस हो तो बात भी है. ठीक है, मैं तो आई हैव माय एडवाइजरी सर्विसेज व्हिच इज बीइंग रनिंग फ्रॉम पास्ट 8 years, अभी तक चल रही है. और जो जुड़ते हैं कोई हटा नहीं है, बट मेरे साथ मैं ऐसा नहीं करता टू बी ऑनेस्ट. तो आई विल एडवाइज यू टू फर्स्ट लर्न, बेसिक से स्टार्ट करो, देन ओनली यू कैन एक्चुअली ट्राई. ओके. Okay, sure. Thank you so much, sir. ओके. और किसी को कोई क्वेश्चन है, जस्ट रेज योर हैंड. किसी को कोई डाउट नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो व्हाटएवर द क्वेश्चन इज. Okay, guys, anyone has any doubt, आप chat box में भी pin कर सकते हैं. Yeah, raise, or you can raise your hand. Or you can raise your hand. I'll give you the access to unmute yourself. It could be anything, guys. आपको boot camp से related doubt है, या how was the class for you, या आपको कोई random doubt है. या randomly आपको whatever you want to ask, कि ऐसे कैसे, Yeah. या ये स्टॉक का ही, किसी स्टॉक का ही पूछना, वो भी बता दूंगा यार. Doesn't matter. And with this, we I are. guess nobody is having a. Can we learn most of the? देखो यार, I'll tell you one thing. Whatever I'm going to teach you, it will definitely change you as a trader. That is, for that I'm very much sure. ठीक है? Because whatever I teach my own strategies, which are proven and I have worked over them from the past 10 years. Perfection करते करते बहुत time लगता है.
बट यस दे आर इफेक्टिव एंड ये सपोर्ट तो आपको रहेगा ही अगर आप मेरे साथ से चलोगे तो आप सीखोगे प्रॉपर तरीके से। इफ यू प्रैक्टिस ऑन असाइनमेंट्स, ये नहीं कि आप मुझसे ट्रेड ही ले लो, आपको डायरेक्शन आई विल गिव यू, बट व्हाट आई टीच इन द क्लास, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये पीसीआर वैल्यू कैसे चेक करनी है, कहाँ ओवरसोल्ड है, कहाँ ओवरबॉट है, जो जो सीधा आपने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करे, देन डेफिनेटली यू विल, और काफी कुछ आप सीखेंगे। ऐसा नहीं है, आई विल नॉट से कि आप पहले ही दिन क्लास करके आप एकदम राकेश झुंझुन वाला टाइप बनेगा, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आई विल बी गिविंग फेक प्रॉमिसेस, बट आई विल टेल यू वन थिंग कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। यार टाइमिंग की तो आई 7 to 9 ही होती है टू बी ऑनेस्ट, तो मेरे हाथ में I नहीं है। am getting a message. Prasanna's payment has been failed. Prasanna, you can try using UPI ID. आप UPI ID ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। कोमल साहू wanted to ask something, he or she wanted to, they say कि एक भी क्वेश्चन ले सकते हैं, तो I'll take the question, just let me know if you want, I can unmute also। कोमल साहू, हाँ, कोमल साहू सेट की कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो मैंने कहा था कि मैं दूंगा इन क्वेश्चन रीजनेबल टाइप का, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मत दे दीजिएगा। कोमल साहू अगर हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यूज द टाइम, पूछ लो। और उसके बाद आई गेस जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट हियर, कोई भी क्वेश्चन है तो आप with this I've also again shared a link, enrollment link in a chat box, and yes, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी आई एम एज्यूमिंग कि यू ऑल हैव लाइक, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम एज्यूमिंग कि नोबडी इज रेजिंग द हैंड एंड नोबडी एक्चुअली पुटिंग द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, so let's wind up because majority of you, so those who have enrolled, you will definitely, देखो एक ट्रेडिंग भाषा में कहते हैं ना ROI, रिटर्न ऑन इनकम, so whatever you are paying you will be getting more than that, ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको अगर 208 210 पे आपको पेट्रोनेट मिल गया, मतलब 212 के अराउंड दिखा, 220 की कॉल ले लेना, 1.5 पॉइंट का ऐसा लगाना, आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, आपकी फीस निकल जाएगी। हालांकि मैंने आज ट्रेड करके निकल गया उससे 2 पॉइंट में, बट मैं एज अ फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, उस पर नजर रखना। तो ठीक है, फिर लेट्स वाइंड अप, है ना। all right sir, एनरोल्ड विल डेफिनेटली लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, आप डेफिनेटली कुछ सीख के ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आई विल रिटर्न द फीस, ठीक है, आप फ्यूचर यूनिवर्सिटी ना दे, मैं दे दूंगा, अगर आप मुझे बता देंगे ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, कुछ ना कुछ सीख के ही जाना, ये मेंटेलिटी बना के आना, और कुछ नहीं, वो बना के आओगे तो डेफिनेटली अच्छा ही सीख के जाएंगे। ओके, so I correct, guess nobody is actually having any doubt, so we should wind up, ठीक है श्वेता। all right, thank Okay, you sir for good giving your night, time, okay, yeah, good night everyone, और जिन्होंने एनरोल किया है right sir, will learn something good, और अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो व्यू में वहाँ पे डालता ही रहूँगा मॉर्निंग में, यू कैन सी फ्रॉम देयर, मॉर्निंग में अगर आप जब ऐड हो जाएंगे तो अभी, मतलब ये नहीं कि व्यू बेसिस आप ट्रेड आपको दे दूँ, सपोर्ट आर्ली चार्ट जब मैं आपको सिखाऊंगा, टेक्निकल की 2 क्लासेस होंगी, तो उसके बाद आपको काफी कुछ समझ में आने लगेगा, तो वो व्यू को कैसे अप्लाई करना है दैट यू विल लर्न, ठीक है, सिर्फ देखते रहना, उन चीज को भी ऑब्जर्व करना, डोंट मेक अ ट्रेड, डोंट मेक अ हेस्टी ट्रेड, ठीक है। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाद में मिलते हैं, all right सी sir, यू ऑल thank you, जगह है, good night sir. ओके, सी यू इन, ओके। I'm here for a few more minutes guys, I'll take up your questions. स्वीकार सर, क्लासेस का जो डेट है वो है 9th July to 17th July, and yes Prince sir, we have received your payment, and welcome, you will receive the added benefits. Guys, we are only left with few seats as of now. अगर आपको register करना है, you can still have option, आप EMI option opt कर सकते हैं, right? And if you are having any issue with the, aren't we getting books now? Praveen sir, have you enrolled for the class? If you have enrolled for the class, you will receive the books and all the added benefits. And all the winners, जो starting में मैंने बात करी थी, we will announce in the WhatsApp group, do not worry. After this, the prices are going to shoot up, which is the original price 5,000. If you are still interested in joining the class,
You still have time. आप enroll कर सकते हैं. अगर आप अभी full amount नहीं pay कर पा रहे हैं, आप अपना WhatsApp या phone number pin कर दीजिए chat box में directed to me. Or what else you can do is that you can contact me or my team. I am again sending phone number in the chat box. All right. With this, do we have any other doubt? Do we have any other doubt related to bootcamp? या bootcamp की timing या कुछ भी fees से related doubt है? If no, then we are good to go. We'll wrap up. Thank you for being here till the end of the class, right? All the people who are here with us, you will receive the certificates, and do not worry. All the other things which we promised in the beginning of the class, right? Do we have any doubt as of now? If not, then we are good to go. Classes will be 2 hours. Yes, sir. Classes will be of 2 hours every day. If by any chance you're not able to attend the whole session, आपको recordings provide कर दी जाएंगी on your WhatsApp group. I think we're good to go. Good night, everyone. Thank you for being here with us till the end. All right. Good night, everyone. We can leave the meeting.